single. He also would be wanting to get that early flow of wicket, but it would be caution for Tector as he will be playing some defensive shots and he wouldn't be wanting to give out his wicket that so quickly. And one more dot delivery for Arshdeep. He's bowling quite so well this time. It was a bit fuller towards the leg of Tector. He wanted to uh, flick the ball towards the fine leg region, but couldn't get a lot of bat to it. And it's British or Irish summers, but everyone's in sweaters out there because it is so overcast that the sun has no chance to shine or put any rays on the ground. It is I think it is noon in Ireland, but it feels like it is around 7 to 8 in Ireland. But nevertheless, we really hope that the rain does not be the spoil sport in this great game of cricket, as Ireland would be wanting to show that they also are ready for the 2024 World Cup, as they have already qualified for it. A better delivery here by Arshdeep, a bouncer to get the better of Tector. Again, a dot by him, and that has been the case. After that single run given by Arshdeep Singh, he has been getting the better of Tector, as Tector is taking some time to understand what Arshdeep is trying to do exactly here. He is just letting the balls go towards the keeper, and this time there has been some checks about the wide, but no, it was Tector who came ahead quite so well, and it would be just a dot. One more delivery swung quite so well. It was the leading edge of Tector, and he wanted to again flick the ball, but with that edge the ball went towards the backward third with a single that will be bringing to the end of the over. It is 7 for 2, the Irish team. Ads कितने annoying होते हैं ना? But do you know what's not annoying? My show called From the Archives, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा. कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, scores and much more. Anyways, continue to enjoy what you will. हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा. आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिकॉन्ग ऐप. क्रिकॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा. एनालिसिस तो मिलेगी, फैंटेसी पिक्स भी मिल जाएंगे. तो जुड़े रहे हमारे साथ, डाउनलोड कीजिए द क्रिकॉन्ग ऐप और सुनते रहिए. हेलो एंड नमस्ते. मेरा नाम है यश पाठक. क्रिकॉन्ग पर आप सभी का स्वागत है. इस ऐप पर दोस्तों आपको मिलेगा आंखों देखा हाल. क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है उसका हम सिलसिला बताएंगे आपको एक अलग अंदाज में. पॉडकास्ट से लेकर लाइव पॉडकास्ट भी हम कवर करेंगे आपके लिए. तो क्रिकेट की दुनिया का भंडार है इस ऐप पर. और अगर आपको न्यूज चाहिए डेली, वीकली, मंथली, तो मेरे एक मसालेदार अंदाज में मैं आपको पेश करूंगा. थोड़ा ऊट पटांग सा ही होगा लेकिन मजा जरूर आएगा. तो जुड़े रहेगा मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पर जिसका नाम है कॉन्ग्स बज और मेरा नाम है यश पाठक. तो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल. मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड. क्रिकॉन्ग के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा. मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे. जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी. Whoa, what an exhilarating start. We are barely recovered from that opening burst from Jasprit Bumrah, because he went for a 4 on the very first ball, and then the next 5 were dots, which had 2 wickets, and now his second over has started with a boundary as well. The score for Ireland reads 13 for the loss of 2 wickets in 2.2 overs, banged in short outside the off stump, and Harry Tector has pushed it back to the bowler, and it will be a dot ball. Well, can kind of understand that
tentativeness in the Irish batsmen because it's raining. It is raining. It's not heavy rain, but it's raining. And many times the batters, irrespective which country you're playing for, you're always looking at the heavens. Are we going to go in now? Would there be a break now, or are we going to play for another 15 minutes? Will the rain be heavy? There is already a yellow weather forecast by our meteorological department. So all these things, when all these things run through your mind, then inadvertently your concentration is not there, and you kind of be indecisive. And that's exactly what happened with Andy Balbirnie, the first wicket to fall, because he was not sure should he go on the front foot or should he play on the back foot. Meanwhile, Rinku Singh makes his first presence felt on the field as he saves a cover drive, a lovely cover drive from Harry Tector, diving to his left. 13 for 2 then in 2.4 overs, and Jasprit Bumrah doesn't even feel like he had missed 11 months of his cricket due to an injury. A short ball outside the off stump. Is that a wicket? No, it's not. Just for a second, I thought that Harry Tector attempted an uppercut and he started walking off, because Sanju Samson collected it, and then Jasprit Bumrah was also walking towards the batsman, and then suddenly it turned back. And when Harry Tector was walking back, I thought, okay, I've nicked it, I'll walk off now. But he continues to play on, and looking at the speeds of Jasprit Bumrah, he has touched 140, and that's a very, very good sign for Jasprit Bumrah, because he's coming back in full steam, and he's not bowling only 2/3 of his bowling speed. On a length outside the off stump, nipping back in, watchfully defended back by Harry Tector. So another over which begins with a boundary but ends with a string of dot balls. 4 dot balls to end the third over. 3 gone. Ireland, after being asked to bat first, are 13 for the loss of 2 wickets. Ads कितने annoying होते हैं ना? But do you know what's not annoying? My show called From the Archives, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा. कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, scores and much more. Anyways, continue to enjoy what you will. हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा. आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिकॉन्ग ऐप. क्रिकॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड. And Ashdeep comes back, 4 runs in the earlier over, and he's his first ball down the leg, but it was Paul Sterling who shuffles a bit and places the ball towards the offside and takes a single. Tector is on strike, 7 runs off his bat, and he's played 12 deliveries here. We are moving over to the 4th over of this game. 14 runs on the board and 2 wickets already lost. Ireland playing a bit slow now after the 2 early losses in the first over itself, and they're just patiently waiting for some room to be given, some I would say average balls, so that they can target and get some boundaries out of there, because at this point it is the Indian bowlers who are keeping it tightly knit, and it was Jasprit Bumrah early on who got those 2 wickets, and then a string of dot. Yes, he went for that 1 odd 4, but after that it was just tight bowling. In the over before that as well, similar thing happened. Went for a 4, and after that a very tight over. This time Ashdeep Singh, a slow one, and it was Paul Sterling who couldn't time the ball at all. He wanted to go for a big shot, but swung his bat. It was outside the off, and he swung his bat quite so well, but couldn't time it, and it was a dot. Nevertheless, Paul Sterling coming in has a lot of cricket experience, as he has played for Ireland since a long time. Yes, he started his T20 or his Irish career in 2008, and after that he has been playing a lot of cricket for Ireland. Would be called as a legend for the Irish cricket team, and he has a lot of T20 experience, plays a lot of franchise cricket, plays for the Abu Dhabi team, and plays for the Islamabad team, as he's been seen in the South African tournament for the I think the Indian T20 league is the only one he doesn't play for. Yeah, and
he as a player of his caliber, he has the potential to get runs here, but this time he's looking a bit flimsy as a bouncer by Arshdeep Singh, and it was just pulled away by Sterling. He wanted to pull it away, but couldn't time that at all, and it was a bit higher. The umpire says it would be wide, so Arshdeep has to come back, reel it in again, and ball this delivery. Singles are also a bit source here, as the only 2 singles taken in this over. 6 runs for Arshdeep in his nearly 2 overs, 2 balls remaining in that, and this time he would go for a bigger shot. Paul Sterling wanted to try this same thing in the earlier delivery, but the ball was a bit high. This time, again a shorter delivery by Arshdeep Singh towards, it was the good length which he targeted, a bit slower one, and Paul Sterling just cleared the boundary ropes and gets his 4 and gets some good total, good 4 more runs on the scoreboard, and it is 20 for 2 now for the Ireland. Last ball of Arshdeep Singh overs remain, and Paul Sterling now moves to 6 of his 5 deliveries faced. He would be happy with that shot as he comes back to cricket. This time a bit off, and it was driven with perfection, but a fielder will be there to end the over with just a single. It is 21 for 2 after 4 the Irish team. Ads कितने annoying होते हैं ना, but do you know what's not annoying? My show called From the Archives, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा. कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, scores and much more. Anyways, continue to enjoy what you will. हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा. आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिकॉन्ग ऐप. क्रिकॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा. एनालिसिस तो मिलेगी, फैंटेसी पिक्स भी मिल जाएंगे. तो जुड़े रहे हमारे साथ, डाउनलोड कीजिए द क्रिकॉन्ग ऐप और सुनते रहिए. हेलो एंड नमस्ते. मेरा नाम है यश पाठक. क्रिकॉन्ग पर आप सभी का स्वागत है. इस ऐप पर दोस्तों आपको मिलेगा आंखों देखा हाल क्रिकेट की दुनिया में क्या. Welcome back, and we are seeing the first change of the afternoon, shall we call it. In Asia, it will be evening right now, close to being night time now, as Prasidh Krishna comes on to bowl. It's a couple of stats then regarding the debutants. Since 2022, 13 players have made their debut for India in T20Is. And it's the most for any team since 2022 in this format. So Prasidh Krishna and Rinku Singh become the 12th and 13th player respectively. India have had 13 players debuting. Afghanistan 8, England 8, and Pakistan 8. So that's nice to see India giving so many chances to those players. Just that sometimes we feel that some players get more chances than some others. That's the only thing. And Prasidh Krishna, begins off with a wide delivery down the leg side, a loosener. Sterling misses his flick, and Samson collects on a length outside the off stump, angling in. Sterling backs away and steers it down towards Ravi Bishnoi at deep third for a single. 23 for 2 as the conditions are heavily loaded in favor of the faster bowlers, and a bit more on Jasprit Bumrah. He becomes the 11th captain to lead India in T20Is. He has also led India in a test match, and that was against England at Birmingham in 2022. It was the final test match. I mean, in 2021, India had got a 2-1 lead in a 5 match series. 4 matches were done, and to play that one remaining match, they travelled again in June in 2022. And unfortunately for India, they ended up losing. As far as this match is concerned, Jasprit Bumrah is playing after 327 days. He has missed, and just to tell you what all he has missed 52 international matches across formats in this period, and he has missed important tournaments like Asia Cup, ICC T20 World Cup 2022, and World Test Championship 2023, and also he has missed the Indian T20 League as well. 23 for 2 are Ireland, and now a very full delivery around middle.
is played towards Shivam Dubey, kind of slipped on the outfield, and he's smiling out there, 24 for 2. But sorry, I believe you had a very, very important point, although you mentioned it with a smile. But towards the end of that fourth over, we saw someone just scraping the dirt off his feet. And I remember this series in 2018 when India had gone to Ireland for a 2-match T20I series, I think just before the English tour, and Jasprit Bumrah injured himself. He got hit on the finger and he was not there for the first couple of tests. You don't want to injure yourself, especially in this rain, by slipping on the outfield. Yes, so that wouldn't be ideal. I mean, that would be really, really bad, as all the players who are currently playing are eyeing at something. As Jasprit Bumrah eyeing at his comeback here. This is his comeback series, and he wouldn't be wanting to get an injury at this point. With a lot of dampness in the ground, we are seeing that the studs and the spikes are getting filled with a lot of mud. The outfield is quite so slow, as this time Sterling wanted to clear the mid-wicket region. But with that slower outfield, he could not at all. He takes a couple of runs, but the situation is not so well, and Prasidh Krishna is also feeling that the ball is getting a lot of moisture, and this issue with the rains can affect both the batters and the bowlers, and the injury for the fielding team is quite so high. And Jasprit Bumrah especially, or maybe any other player, they have a lot of more matches to come this season, and they would be wanting to not get injured by this reason, which is due to the damp outfield. And this outfield, I would definitely say, not ideal for a cricket game, as there is chances of rain any moment whatsoever, and the damp field is quite there. But with the chances of rain, there is also chance for a wicket, as it is Tector who went for that hook shot, and Tilak Verma making no mistake towards the short third region, and he takes a very, very easy catch, I would say, and the third man goes back to the pavilion. It is the third wicket, and Prasidh Krishna gets his first international T20 wicket out there. He would be really, really happy with his performance. That would be end of his over. It is 5 overs gone, 27 for 3, and Harry Tector goes back to the pavilion with 9 runs on board and 16 balls which he played. This is what he's known for, Prasidh Krishna. That's extra bounce. So he has been troubling the batters throughout this over. He started off with a full length delivery down the leg side, but after that he's kind of gone to his strength, which is being bowling back of a length and bowling it short. And this pitch actually has something in it for the bowlers. No, I'm not talking because of the overcast conditions or because of the rainy conditions. This pitch has extra bounce. So if you bang it, if you exert your shoulder, you can get your rewards. And this is not the first time that we are seeing a ramp go awry, and Harry Tector tried to ramp it because third was inside the circle, and he tried to ramp it over that short third fielder, but Tilak Verma came in his way, and Harry Tector departs after a watchful 9 from 16 deliveries. And sadly for Ireland, they are not going anywhere. 27 for 3, 2 wickets lost in the very first over. That's the only solace if we talk, because the next 4 overs they lost only 1 wicket. But it's looking gloomy, not only from the heavens above, but it is looking gloomy from the in the performance as well. चलिए, अभी यहाँ पर गेंदबाजी में परिवर्तन हो गया है. रवि बिश्नोई आ गए हैं लेग स्पिन गेंदबाजी करने के लिए. पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू अपील, लेकिन अनलेस आपके पास 6 स्टंप्स है, आप उसे एलबीडब्ल्यू आउट ही नहीं दे सकते, क्योंकि पहली गेंद तो ऑफ स्टंप के बाहर थी, इंपैक्ट ही आउटसाइड दी ऑफ स्टंप था. और क्योंकि रवि बिश्नोई लेग स्पिनर है, वो गेंद अंदर नहीं आएगी, वो गेंद बाहर जाएगी. तो अच्छा किया कि संजू सैमसन ने सीधा कह दिया कि भाई साहब आप देखें तो सही कि आपको लगा कहां पर है बल्लेबाज को, आप रिव्यू तो आप ले ही नहीं. क्या हम अब एक गुगली एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, गुगली अंदर आती हुई गेंद, पॉल स्टार्लिंग पीछे जाकर इसे कट करने का प्रयास करते हुए लेकिन चूक गए, और गेंद जो है ऑफ स्टंप को जाकर लगती हुई, और धाए यहां पर विकेट्स गिरते हुए. पहले ओवर में धाए दूसरी गेंद और 5वीं गेंद पर विकेट, और अभी 3 गेंदों में एक बार फिर से 2 विकेट गिरते हुए 27 पे 4 हो गए हैं आयरलैंड. और ये जो सीरीज है ये भारत के लिए क्यों बहुत काफी महत्वपूर्ण है. ऑफ कोर्स जसप्रीत बुमराह वापस तो आ ही रहे हैं, लेकिन भारत के जो फ्रिंज प्लेयर्स है, नहीं हम उन्हें फ्रिंज प्लेयर्स नहीं कह सकते,
वो प्लेयर्स है जो भारत के बैकअप है या भारत का भविष्य है, उन्हें इस सीरीज में ट्राई आउट करने का मौका मिलने वाला है। और उनमें से एक रवि बिश्नोई है, क्योंकि युजवेंद्र चहल ज्यादा साल नहीं खेलने वाले। नहीं, हम चाहते हैं कि वो जितना हो सके उतना खेले, पर उम्र बढ़ती जा रही है, उम्र तो कम होती नहीं। तो ऐसे इसमें रवि बिश्नोई जो बहुत यंग है या युवा है, वो भारत के लिए स्टेप अप कर सकते हैं आने वाली पीढ़ी में, आने वाले दशक में। तिलक वर्मा है एक और प्लेयर, सूर्य कुमार यादव तो है ही, हो सकता है आने वाले दशक में सूर्य कुमार यादव भी बन जाए भारत के कप्तान कहीं ना कहीं। तो ऐसे केस में रवि बिश्नोई जैसे प्लेयर जो हैं भारत के लिए बहुत ही बड़े प्लेयर साबित हो सकते हैं। एक गुगली थी ऑफ स्टंप के बाहर, पॉल स्टर्लिंग ने पढ़ा नहीं, पॉल स्टर्लिंग को लगा कि गेंद पिच होकर उनके बाहर की तरफ जाएगी, लेकिन गेंद अंदर आई और वो पंच करना चाहते थे कवर की दिशा में, लेकिन चूक गए, गेंद अंदर आई और ऑफ स्टंप को जाकर टकरा। 27 4 विकेट के नुकसान पर और नए बल्लेबाज हैं जॉर्ज डॉकरल, और ऑलरेडी भारत यहाँ आयरलैंड के मिडिल ऑर्डर में घुस चुका है। जी सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। जी हाँ, और यहाँ पे आपने कहा कि ये सब यूथ प्लेयर्स ये टूर्नामेंट खेलने जरूर आए हैं, और इसी के साथ ये एक मैं कहूँगा टाइप ऑफ लिफ्ट ऑफ है उन प्लेयर्स के लिए जो आगे जाके एशियन गेम्स खेलने वाले हैं। जी हाँ, पहली बार एशियन गेम्स में मेंस क्रिकेट होने वाला है, और रिंकू सिंह, ऋतुराज गायकवाड़ जो कप्तानी करने वाले हैं उस टूर्नामेंट में, रवि बिश्नोई, मुकेश कुमार, ये सब प्लेयर्स ये टूर्नामेंट ये सीरीज भी खेल रहे हैं। तो ये काफी इम्पोर्टेंट होगा कि ये जो प्लेयर्स एशियन गेम्स खेलने वाले हैं वो इस सीरीज में बढ़िया परफॉर्म करे। जैसे अभी तक तो हमें रवि बिश्नोई करते हुए दिख रहे हैं, तिलक वर्मा भी उस लिस्ट में ऐड कर लीजिए, फिर राहुल त्रिपाठी हो गए अब जो एशियन गेम्स के स्क्वाड में जा रहे हैं, फिर आवेश खान, अर्शदीप सिंह, जी हाँ, मुकेश कुमार, जैसे मैंने कहा, शिवम मावी खेल रहे हैं, शिवम दुबे, और प्रभसिमरन सिंह जो कीपर है जितेश शर्मा के साथ। और ये काफी इम्पोर्टेंट होगा। जी हाँ, और वॉशिंगटन सुंदर भी एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बन के आने वाले हैं एशियन गेम्स के लिए, क्योंकि हम वो जो गोल्ड मेडल है उसे आई कर रहे हैं, और वो गोल्ड मेडल के नीचे शायद देखना पसंद नहीं करेगी इंडिया, क्योंकि एक अच्छा मौका मिला है एक इंडियन पूरे खेमे को हर स्पोर्ट में एक बेहतर लिफ्ट देने का। और हम जैसा कहते हैं कि अगर ओलंपिक्स में क्रिकेट होता तो क्या हम वो गोल्ड मेडल जीत पाते। जी हाँ, ओलंपिक्स में तो अभी नहीं, पर एशियन गेम्स में जरूर एक मौका है और वो गोल्ड मेडल की तरफ हम देखेंगे। और ये जो स्टार्ट और ये एक प्री सीजन मैं कहूँगा उन यूथ के लिए होगा ये टूर्नामेंट, क्योंकि इस परफॉर्मेंस के बाद वो सीधा एशियन गेम्स जो सितंबर में होने वाले हैं वहां जाने वाले हैं मोस्ट ऑफ द खिलाड़ी यहाँ से। तो थोड़े एशिया कप में भी जाएंगे, पर मोस्ट ऑफ द खिलाड़ी जाएंगे वो एशियन गेम्स खेलने के लिए। और यहाँ पे एक अच्छी ओवर की होती हुई समाप्ति, 30 रन बोर्ड पे आ चुके हैं और 4 अर्ली विकेट खो चुकी है आयरलैंड की टीम। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मोर। एनीवेज, कंटिन्यू। प्रसिद्ध कृष्णा अपना दूसरा ओवर लेके आते हुए लेंथ गेंद अंदर आते हुए ऑफ स्टंप के बाहर से सिर्फ टैप कर दिया कर्टिस कैम्फर ने ऑफ साइड की तरफ और एक आसान सा रन ले लिया। एक रिकैप देने के लिए कि पावर प्ले खत्म हो गया है और पावर प्ले में सिर्फ आए हैं 30 रन आयरलैंड के लिए और विकेट गए हैं 4। और अगर मैं उनकी बाउंड्रीज की बात करूं, उनके बाउंड्रीज उनके विकेट से कम है। चौके लगे हैं सिर्फ 3, यानी 12 रन आए हैं 3 गेंदों में और बाकी 15 गेंद माफ कीजिएगा, बाकी 33 गेंदों में रन आए हैं सिर्फ 18 और विकेट खोए हैं 4। तो वो एक चिंताजनक विषय है, पर ये हमेशा से रहा है आयरलैंड का। उन्हें वो ओपनिंग स्टार्ट्स मिलते ही नहीं है। उन्हें मिडिल ऑर्डर ज्यादा करके मिडिल ऑर्डर उनको बेल आउट करके जाता है। और ये भारत के साथ ही नहीं, ये अफगानिस्तान के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, सब जगह ऐसी ही है उनकी हालत। और आयरलैंड में अगर आप खेल रहे हैं
तो शुरू में बल्लेबाजी करना बहुत ही मुश्किल लगता है। इसलिए यहाँ पर कप्तान जो भी आते हैं वो पहले गेंदबाजी करने का सोचते हैं। पर फिलहाल भारत के लिए काफी अच्छा चलता हुआ बीतता हुआ, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने 2 ओवर डाले, पावर प्ले में 10 रन दिए, 2 विकेट लिए। अर्शदीप सिंह थोड़े ऑफ कलर लग रहे थे, वो वेस्ट इंडीज सीरीज में ही ऑफ कलर लग रहे थे, शायद उन्हें थोड़ी ब्रेक की जरूरत है। प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छी शुरुआत की है और रवि बिश्नोई ने भी अच्छी शुरुआत की है। अगली गेंद कृष्णा की, आगे आकर खेलने का प्रयास और सीधा कवर के हाथों प्रसिद्ध कृष्णा को यहाँ पर दूसरा विकेट मिलता हुआ। 9 गेंदें डाली है उन्होंने और उन्होंने 2 विकेट भी चटकाए हैं। यहाँ पर एक बार फिर से प्री मेडिटेटेड शॉट में कहूंगा जॉर्ज डॉकरल द्वारा पहले ही अपना लेग स्टंप दिखाया, बैकअवे किया और फिर चहलकदमी की, आगे आए, इनसाइड आउट खेलने का प्रयास किया, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने वो देख लिया, फॉलो किया उन्हें, बैक ऑफ लेग गेंद डाली जो उनका स्ट्रेंथ है और डॉकरल को रूम के लिए क्रैम्प कर दिया। डॉकरल ने खेलने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं खेल पाए क्योंकि उन्हें वो रूम ही नहीं मिला और गेंद जो है बल्ले के ऊपरी हिस्से से जाके लगी और सीधा गई ऋतुराज गायकवाड़ के पास जो एक्स्ट्रा कवर पे खड़े थे और एक आसान सा कैच उन्होंने लपक लिया। क्या हो रहा है भाई, 39 गेंदे और 5 विकेटें गिर चुकी है, यानी ऑन एन एवरेज हर 8 गेंद पे एक विकेट गिर रहा है यहाँ पर आयरलैंड के लिए। जी हाँ, और अभी ऐसी स्थिति हो गई है कि आप कह रहे थे मिडिल ऑर्डर बेल आउट करता है, पर आधा मिडिल ऑर्डर भी जा चुका है, 5वीं विकेट जा चुकी है, आधा टीम पवेलियन को वापस पवेलियन की तरफ रुख ले चुका है और स्थिति काफी मैं कहूँगा बदतर है। 31 रन ही आए हैं ऑन बोर्ड। मार्क एडर जो नए बल्लेबाज आए हैं, जी हाँ, वो भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, पर अभी इस दरमियान ऐसा ही लग रहा है कि जो गेंदबाजी कर रहे हैं इंडिया की टीम वो काफी बेहतर और कुछ ज्यादा ही बेहतर हो रही है। वो पूरी तरह ओवरवेल्म कर रही है आयरिश टीम को और ये देखना पड़ेगा अभी कि इंडियन टीम का क्या अभी यहाँ से एक प्लान ऑफ एक्शन होगा, क्योंकि विकेट 5 जा चुके हैं। आपको पता है यहाँ पे बारिश की संभावना ज्यादा है, तो आप जितना जल्दी विकेट्स लेके एक टोटल को चेस कर पाए कि अभी हमें देखना पड़ेगा आयरलैंड यहाँ से। आप तो बहुत आगे निकल गए, बहुत ज्यादा ही आगे निकल गए शौर्य, क्योंकि अभी भी 5 विकेट लेना बाकी है। क्योंकि मैं आपको बोलने वाला था कि भारतीय टीम की क्या स्ट्रैटेजी होगी, लेकिन भारतीय टीम की एनालिस्ट की स्ट्रैटेजी ऑलरेडी चालू हो गई है, क्योंकि वो ढूंढ रहे हैं स्कोर कार्ड्स में कि भारत के खिलाफ सबसे कम स्कोर T20I में किसने बनाए हैं। जी हाँ, वो एक लुक थ्रू होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि विकेट जाने की ज्यादा संभावना है। दोनों बल्लेबाज थोड़ा मुश्किलात फेस कर रहे हैं। इस बार प्रसिद्ध कृष्णा ने एक बाउंसर डाली, पुल करने की कोशिश की यहाँ पे एडर ने, बट एक एज मिला और एज से एक सॉलिस ऑफ अ बाउंड्री कीपर के ऊपर गई गेंद और 4 रन आते हुए स्कोरबोर्ड पे। रन्स काफी मुश्किल से आ रहे हैं यहाँ पे और दोनों ही बल्लेबाज अभी यहाँ पे एक एंकरिंग इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, काफी एक बढ़िया शो ऑफ बैटिंग करना पड़ेगा यहाँ से आयरलैंड को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि अभी आप देखें तो कृष्णा की ये दूसरी ओवर है। जसप्रीत बुमराह ने 2 ही ओवर डाले, बिश्नोई ने 1 ही ओवर डाली है और यहाँ पे एक बाउंसर फिर डाली प्रसिद्ध कृष्णा ने, हुक करने की कोशिश की पर नाकाम होते हुए 35 for 5 है आयरलैंड का स्कोर अभी। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मोर। एनीवेज, कंटिन्यू टू एंजॉय व्हाट यू विल। हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा। आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिकॉन्ग ऐप। क्रिकॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा। एनालिसिस तो मिलेगी, फैंटेसी पिक्स भी मिल जाएंगे, तो जुड़े। रवि बिश्नोई अपने दूसरे ओवर का प्रारंभ करते हुए लेग स्टंप पे थी गेंद, एक और गूगली, उसे पीछे जाकर कर्टिस कैम्फर ने खेल दिया फाइन लेग की तरफ 2 रन के लिए और 37 रन 5 विकेट के नुकसान पर अब आयरलैंड की स्थिति है। और यहाँ पर
हम तो कैमरा में देख रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है बारिश बहुत ज्यादा ही तेज हो गई है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यशस्वी जायसवाल द्वारा। छोटी गेंद इस बार गूगली नहीं थी, लेग स्पिनर थी, उसे पीछे जाकर कट कर दिया पॉइंट के दिशा में। और यशस्वी जायसवाल एक और उभरते सितारे, जिनका हमने ऑलरेडी वेस्टइंडीज में देख लिया था कि किस तरह से वो बल्लेबाजी कर सकते हैं, और फिलहाल अब फील्ड में अपना जलवा दिखाते हुए। तो ये भी एक एक्चुअली अंपायर्स के लिए भी मुश्किल घड़ी होती है, क्योंकि वो उन्हें सोचना पड़ता है कि कब वो निर्णय लें कि प्लेयर्स को फील्ड से बाहर लेके चले, क्योंकि एक बार आप गए, फिर अगर आपको वापस आना है तो बारिश पूरी तरह से रुकनी होगी और आप ड्रिजल में खेल सकते हैं। लेकिन ऐसे में हम इंजुरीज की भी बात कर रहे थे। और फिलहाल भारत का सिचुएशन, आपने तो कहा कि भारत ये कोशिश करेगी कि जल्दी रैप अप करना है और जल्दी स्कोर चेस करना है। मेरे हिसाब से भारत वो सोच ही नहीं रहा होगा। भारत ये सोच रहा होगा कि हमने जो प्लेयर्स को हम लेकर गए हैं उन्हें एक्सपीरियंस मिल रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है क्या। सो फॉर एग्जांपल जसप्रीत बुमराह को एक्सपोजर मिलना बहुत जरूरी था, क्योंकि उनके लिए फिटनेस का सवाल था। अर्शदीप सिंह अगर 4 ओवर नहीं भी डाले कुछ फर्क नहीं गिरेगा। प्रसिद्ध कृष्णा को 4 ओवर डालना जरूरी है, क्योंकि उनको वो भी इंजरी से वापस आ रहे हैं। फिर उसके बाद रवि बिश्नोई, वो इंजर्ड तो नहीं है, लेकिन उन्हें वेस्टइंडीज में एक ही गेम खेलने का मौका मिला, तो उनके लिए ये मैच काफी इंपॉर्टेंट है। उनके अलावा अगर हम देखें गेंदबाजी में, शायद शिवम दुबे को मौका मिल सकता है, शायद, आई एम नॉट श्योर, या फिर वॉशिंगटन सुंदर। पर इन दोनों को नहीं भी मिला तो भी बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने खेला है, ये क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। और जहां तक बैटिंग का सवाल है, हु नोस आयरलैंड के स्कोर के हिसाब से क्या आप अपना ओपनिंग कॉम्बिनेशन चेंज करेंगे। इसी बीच रिवर्स स्वीप, और जसप्रीत बुमराह को जसप्रीत बुमराह ही है शॉर्ट थर्ड पे, जो पीछे गए कैच लपकने के लिए, लेकिन नहीं लपक पाए। रिवर्स स्वीप खेल दिया वहां पर कर्टिस कैम्फर ने, और शॉर्ट थर्ड को क्लियर कर दिया, 2 बाउंस और फील्ड के अंदर 4 रनों के लिए। बढ़िया शॉट, यहाँ पर उन्होंने रिस्क लिया, पर रिस्क के साथ उन्हें रिवॉर्ड भी मिल गया और स्कोर बनता हुआ 43, 5 विकेट के नुकसान पर आयरलैंड के लिए। आखिरी गेंद इस 8वें ओवर की रवि बिश्नोई की, क्या यहाँ पर एक तेज तरार गूगली होगी या फिर एक लेग स्पिनर होगा, कम बैक करना देखना पड़ेगा। गूगली तो थी और इसे ड्राइव कर दिया है डीप पॉइंट की तरफ, 1 ही रन वहां पर मिलेगा। तो 9 रन उस ओवर में आते हुए 8 ओवर के बाद 44 रन 5 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर आयरलैंड। तो मैं बात कर रहा था कि बैटिंग में क्या क्या भारत सोच सकता है। अगर आयरलैंड 120 के आगे नहीं पहुंचती है तो फिर ऋतुराज गायकवाड़ का बैटिंग करना बहुत जरूरी है। संजू सैमसन को अगर ओपनिंग ट्राई कर सकते हैं, नॉट बिकॉज उन्हें जरूरत है, बट क्योंकि वेस्टइंडीज में उनका बहुत ही खराब प्रदर्शन था। अब तिलक वर्मा को आप थोड़ा डाउन द ऑर्डर लाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उन्हें वेस्टइंडीज में एक अच्छी प्रैक्टिस मिली है। मे भी आप चाहे तो रिंकू सिंह को ऊपर भेज सकते हैं। तो ये 3 चीजें हैं जो मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि कभी कभी आप अपने प्लेयर्स के लिए खेलते हैं, मैच में आपको उतना इंटरेस्ट नहीं होता। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत को मैच जीतने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन भारत का जो मेन नजारा है वो अपने खिलाड़ियों को एक अच्छा रन देने का होगा। तो इसके लिए भारत की तरफ से ये मैच होना थोड़ा बहुत जरूरी है। वैसे और 2 T20Is हैं इस श्रृंखला में, लेकिन उसके बाद जो है भारत के लिए काफी बड़े बड़े सीरीज आ रहे हैं। एशिया कप आ रहा है, एशियन गेम्स आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया सीरीज आ रही है, वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उसमें ये सारे प्लेयर्स को देख पाना थोड़ा मुश्किल है। शिवम दुबे को अब गेंद थमा दी गई है, राइट आर्म ओवर द विकेट आ रहे हैं वो कर्टिस कैम्फर को। लेंथ गेंद अराउंड द ऑफ स्टंप, उसे धकेल दिया लॉन्ग ऑन की तरफ कर्टिस कैम्फर ने और 1 रन चुरा लिया। और ये जो विकेट्स गिरे हैं, एक मैं मानता हूं एंडी बैलबर्नी का बहुत ही बढ़िया गेंद थी, पर उसके बाद लॉकन टकर का लैक ऑफ एप्लीकेशन, हैरी टेक्टर लॉक ऑफ एप्लीकेशन, पॉल स्टर्लिंग उन्होंने गेंद पड़ी ही नहीं, और जॉर्ज डॉकरन एक बार फिर से लैक ऑफ एप्लीकेशन। और ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि आप अपने ही घर पे खेल रहे हैं और अपने ही घर पे आप एप्लीकेशन के बिना खेल रहे हैं, तो थोड़ी मुश्किलातें तो आपको जरूर आएंगी। 45, 5 विकेट के नुकसान पर लेंथ गेंद, और एक बार फिर से वो एक मां का डायरेक्ट शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन लाइन में थे ही नहीं, थोड़ा पैर हिला ही नहीं। अगर वो पंच करना चाहते हैं कवर के दिशा में, तो आपको आपका बाया पैर तो थोड़ा तो हिलाना पड़ेगा, वो आप हिलाएंगे ही नहीं पैर को, तो फिर आप शॉट कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। और किस्मत उनकी अच्छी थी, क्योंकि गेंद पिच होकर सीम के अगेंस्ट चली गई और जस्ट आउटसाइड एज को, बाहरी किनारे को बीट करते हुए सी निकल गई 45, 5 विकेट के नुकसान पर। तो ये सारी चीजें हैं जो एक भारत की तरफ से हम देखना चाहेंगे कि किस तरह से वो जो युवा पीढ़ी है वो परफॉर्म करती है। इसी बीच क्या ये एक और विकेट है? नहीं, क्या ये देखना पड़ेगा कि क्या कैच छोड़ा है यहाँ पर या फिर गेंद आगे गिरी है। वैसे तालियां तो बजा रहे हैं जसप्रीत बुमराह के लिए, एक अच्छी कोशिश की थी उन्होंने, एक लेंथ गेंद थी, धीमी गति की, और उसे ड्राइव करने का प्रयास किया मार्क अडेर ने,
लेकिन टाइम नहीं कर पाए। गेंद जो है बल्ले के निचले हिस्से से गई और नहीं, जस्ट आगे गिरी। जसप्रीत बुमराह के जो मिड ऑफ से अपने बाएं तरफ गए कैच लपकने के लिए, लेकिन गेंद उनके आगे जाकर गिरी। और शौर्य, हमने एक ग्राफिक देखा था जहां पर जसप्रीत बुमराह ऑब्वियसली सबसे ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी हैं इस मैच में, भारत के लिए 61 मैच, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट अनुभवी खिलाड़ी हैं वो वॉशिंगटन सुंदर है, जिन्होंने 39 मैच खेले हैं। तो इतना बड़ा गैप है, और इस पूरे 11 जो प्लेइंग 11 में है, सिर्फ 3 ही खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 30 या 30 के ऊपर मैच ऐसे खेले हैं। तो उनके हिसाब से ये मैच काफी इंपॉर्टेंट। जी हाँ, वो इम्पोर्टेंस रहेगा। और जैसे मैंने पहले कहा था कि मोस्ट ऑफ द खिलाड़ी जो यहाँ पे खेल रहे हैं वो मोस्टली सब चाइना जाने वाले हैं एशियन गेम्स खेलने के लिए। तो और इंडिया एज ए टीम जरूर होप करेगी कि वो गोल्ड मेडल जीत पाए। हाँ, हालांकि जो इंडोनेशिया, चाइना वैसी टीम्स के साथ हो गए, वहाँ पे इतना चैलेंज नहीं होगा। पर अगर आप देखें तो वहाँ पे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी है, तो वो अपनी बेस्ट स्क्वाड भेजेगी। और इंडिया को वो एक गोल्ड मेडल दिलाने की वहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी जरूर है। और ये एक प्रीडिसेसर होगा वो इस टूर्नामेंट के लिए और लॉट ऑफ प्लेयर्स के लिए। क्योंकि अगर हम देखें तो 90 से ज्यादा % स्क्वाड जो ये IRE सीरीज खेल रही है, मैंने नाम भी लिए थे पहले, तो तब वो सब चाइना भी जाने वाले हैं। तो ये काफी इम्पोर्टेंट होगा कि जो सारे प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे एक बढ़िया परफॉर्मेंस दे, तो वो एक मोरल बूस्ट के साथ एशियन गेम्स जा पाए। और यहाँ पे एक अच्छी ओवर की हुई समाप्ति, 50 रन आ गए हैं आयरलैंड के बोर्ड पे, और विकेट्स उनके गए हैं 5। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, scores and much more. Anyways, continue to enjoy what you will. हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा। आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिकॉन्ग ऐप। क्रिकॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा। एनालिसिस तो मिलेगी, फैंटेसी पिक्स भी मिल जाएंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, डाउनलोड कीजिए द क्रिकॉन्ग ऐप और सुनते रहिए। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है यश पाठक क्रिकॉन्ग पर। तीसरा ओवर ऑफ स्पिन, क्योंकि लेकिन दूसरे बॉलर जो स्पिन गेंदबाजी करेंगे और वो है वॉशिंगटन सुंदर, वो आए हैं अपना ऑफ स्पिन डालने के लिए। इसके पहले रवि बिश्नोई ने पहला ओवर ऑफ स्पिन डाला था, 2 ओवर डाले थे, फेंके थे उन्होंने 2 ओवर 12 रन और 1 विकेट। और वो विकेट था पॉल स्टर्लिंग का, गूगली पे आउट किया था उन्होंने। और पॉल स्टर्लिंग एक लेग ब्रेक एक्सपेक्ट कर रहे थे रवि बिश्नोई से। तो उस हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर भी एक काइंड ऑफ इंजरी से ही वापस आ रहे हैं। बहुत सारे, क्योंकि आजकल इतना क्रिकेट हो रहा है, सिर्फ भारत ही नहीं, बहुत सारे टीम्स जो है इंजरी से जूझ रही हैं। अभी हाल ही में मैंने कुछ क्षण पहले ही ये खबर पड़ी कि अभी ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका जाने वाली है, उसके लिए स्टीवन स्मिथ रूल्ड आउट है और मिचेल स्टार्क भी रूल्ड आउट है और पैट कमिंस भी रूल्ड आउट है, ये जो अभी एशेज में खेल रहे थे। तो क्लियरली हर टीम जूझ रही है इंजुरीज के साथ। अब पता नहीं इंग्लैंड ये कोशिश करेगी कि बेन स्टोक्स को वापस लेके आए वर्ल्ड कप के लिए, एक इंस्पिरेशनल चीजें के लिए, लेकिन यहाँ पर मुझे एक्चुअली खिलाड़ियों के लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि बहुत जोर से बारिश हो रही है और शायद अभी एक ड्रिंक्स ब्रेक होगा 10वें ओवर के बाद, और यहाँ पर अंपायर्स जो है शायद एक दूसरे से विचार विमर्श करेंगे कि क्या करना है और कितने देर खिलाना है, क्योंकि ये कहीं ना ये इंजुरीज के, ये माफ कीजिएगा, ये बारिश की वजह से ग्राउंड जो है वो गीले होते रहता है। तो कहीं वो गीले आउटफील्ड में आप बॉलर्स या फील्डर्स फिसल ना जाएं। और ये टूर का पहला ही मैच है, इसके बाद जो है आप धीरे धीरे छाते जो है खुलने लगे हैं, जैकेट्स पहनने लगे हैं लोग, और आप ये नहीं चाहते क्योंकि आपके पास और 2 T20s हैं, वहां पे आई एम श्योर बेटर फोरकास्ट होगा, या फिर और वो तो आगे वाली की बात है, आप आज से फ्यूचर के बारे में नहीं सोच सकते। बट अब जो है सो है, और बहुत ज्यादा बूंदाबांदी हो रही है और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि एक जस्टिफाइबल डिसीजन हो। हाँ, भारत चाहता है कि ये मैच हो, लेकिन क्या ये मैच इन कंडीशंस में होना जरूरी है, क्योंकि जितनी तकलीफ आयरलैंड को हो रही है बैटिंग करने के टाइम पे, उतनी आपके फील्डर्स को भी हो सकती है फील्डिंग करने के टाइम पे। जी हाँ, वो एक इम्पोर्टेंट डिसीजन होगा अभी अंपायर्स को लेने के लिए, क्योंकि
अभी आप देख सकते हैं कि प्लेयर्स थोड़ा काफी ज्यादा यहाँ पे परेशानी में दिख रहे हैं। यहाँ पे फील्ड पे काफी जब भी कोई प्लेयर चल रहा है तो काफी ज्यादा ग्राउंड से डग निकल के बाहर आ रहा है और काफी ज्यादा मड निकल के बाहर आ रहा है। पिच भी थोड़ी क्या काफी मॉइस्ट हो गई है अभी। अगर आप देखें वॉशिंगटन सुंदर बार बार जाके अपना हाथ साफ कर रहे हैं, बार बार जाके अपना हाथ ग्राउंड पे मार रहे हैं, पर ग्राउंड पे भी मार के उनका कुछ फायदा नहीं होने वाला है, ग्राउंड ही इतना गीला है। तो अभी देखना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं। ग्रिप तो उनको मिल नहीं रही है, बॉल भी उनकी स्पिन नहीं हो रही है अगर आप देखें तो वो एक इशू तो है। और उसके साथ बैटर्स भी कुछ खासा खुश नहीं है और देखना पड़ेगा कि 10वें ओवर के बाद क्या डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि अभी हो चुका है 10वां ओवर। 57 for 5 है आयरलैंड का स्कोर फिलहाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से। 10 ओवर हो गए हैं और 10 ओवर के बाद यहाँ पर आयरलैंड का स्कोर है 57। 5 विकेट के नुकसान पर रवि बिश्नोई आ गए हैं गेंदबाजी करने के लिए अपने तीसरे ओवर। तो स्पिन इन टैंडम, एक एंड से वॉशिंगटन सुंदर और एक एंड से रवि बिश्नोई। और ये एक अच्छी परीक्षा है इन दो खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि आपके पास ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं जहां पर आप ओवरकास्ट या रेनी कंडीशंस में गेंदबाजी कर रहे हो और तब क्या स्पिनर्स आपके ग्रिप कर सकते हैं या नहीं, ये देखने के लिए एक अच्छी परीक्षा है। फिलहाल 59 रन 5 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर आयरलैंड की टीम, और एक थोड़ी बहुत यहाँ पर साझेदारी जमती हुई 28 रनों की साझेदारी हो चुकी है 23 गेंदों में, लेकिन ऐसा कुछ दबाव उन्होंने डाला नहीं है भारत के ऊपर। रवि बिश्नोई राइट आर्म ओवर द विकेट से आगे आते हुए एलबीडब्ल्यू अपील यहाँ पर रवि बिश्नोई की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा डाउन द ट्रैक आ गए थे मार्क अडेर, और गूगली भी थी, शायद लेग स्टंप से बाहर जा रही थी। और यहाँ पर एक्चुअली थोड़ी बहुत जबरदस्ती हो रही है, क्योंकि बिश्नोई नाखुश है संजू सैमसन से। वो कह रहे नहीं आउट है, आउट है, आउट है। संजू सैमसन उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बेटा आप बहुत आगे आ गए थे प्लेयर और आपने गूगली डाली है, यानी गेंद जो है अंदर आ रही है और वो लेग स्टंप के बाहर जा रही है। लेकिन रवि बिश्नोई ऐसे जो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे ऐसे शब्द यूज करने पड़ रहे क्योंकि लिटरली वही हो रहा है। वो कह रहे नहीं नहीं आउट है, आउट है, आउट है। तो जसप्रीत बुमराह ने वो एक कहते ना, चलो तरस खाते हुए आपको एक विकेट देने के लिए मैं रिव्यू ले लेता हूं, क्योंकि अगर ये लेग स्टंप को हिट कर रहा होगा तो चलिए आपको एक विकेट मिल जाएगी, लेकिन अगर अंपायर कॉल हुआ हाइट पे तो यहाँ पर एक्चुअली ऐसा लग तो रहा है कि लेग स्टंप को शायद क्लिप करके जा सकती है, पर बिश्नोई काफी कॉन्फिडेंट है। बिश्नोई ये कह रहे हैं कि हाइट बहुत कम थी, जो तो बॉल में बाउंस नहीं थी, तो अगर अडेर डाउन द ट्रैक भी आए हैं तो भी ये गेंद लेग स्टंप को जाके लगेगी। इसे रिव्यू कर दिया गया है और यहाँ पर ये देखना होगा कि बॉल ट्रैकर, अल्ट्रा एज, ये सब क्या कहते हैं। सबसे पहले तो अल्ट्रा एज देखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कोई इनसाइड एज है वहां पर, और काफी दूर है बल्ला गेंद से और पैड्स को लगते हुए। अब ये देखना होगा, चलिए नो अल्ट्रा एज पर कुछ भी नहीं, गेंद जो है इनसाइड एज को मिस कर रही है। अब ये देखना होगा कि क्या ये गेंद जो है लेग स्टंप को लेके जाएगी। और अभी भी यहाँ पर रिप्ले को देखकर रवि बिश्नोई ऋतुराज गायकवाड़ को ये कह रहे कि देखा, मैंने कहा था ना, देखो यहाँ से जाकर वो लेग स्टंप को जाके लगने वाली है गेंद। यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ सुन भी नहीं रहे, वो पीछे की तरफ देख रहे हैं। और बॉल ट्रैकर लोड करने के लिए काफी समय लग रहा है यहाँ पर, और आ गई इवेंचुअली बॉल ट्रैकर। इंपैक्ट आउटसाइड, इंपैक्ट इन लाइन है, और क्या लेग स्टंप को जाके लग रही है? बिल्कुल। चलिए रवि बिश्नोई जी, आपने ये विकेट जो है अपने नाम कर लिया है और
संजू सैमसन भी यहाँ पर मुस्कुराते हुए कि चलिए आप सही थे, और एक्चुअली पूरी टीम को लग रहा था कि नॉट आउट है और हमें भी लग रहा था कि शायद गोइंग डाउन द लेग साइड है, बट अब सबके मुंह पे एक रिलीफ है। और जसप्रीत बुमराह बोल रहे थे अरे भाई आप तो कॉन्फिडेंट थे रवि बिश्नोई के। हाँ बिल्कुल, मुझे पता ही था कि वो लेग स्टंप को लगने वाली है, मैं कोई गेंदबाज हूं, मुझे पता है कि बॉल कहाँ पे लगी है। और संजू सैमसन का वो एक एम्बैरेसिंग स्माइल, अरे मैं तो कह रहा था डाउन द लेग साइड जाएगी, और रवि बिश्नोई कहते हुए मैंने कहा था ना रिव्यू लेना चाहिए। लेकिन एक अच्छी गेंद रवि बिश्नोई की। हालांकि हमें ये स्वीकार करने में कोई एम्बैरेसमेंट नहीं हो रही, हमें भी लग रहा था कि गोइंग डाउन द लेग साइड थी, क्योंकि मार्कडर बहुत डाउन द ट्रैक आए थे, बहुत डाउन द ट्रैक, और ये एक्चुअली शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, गुगली थी, ऑस्ट्रम के बाहर टप्पा खाई, अंदर आई और मार्कडर फ्लिक करने का प्रयास कर रहे थे, चूक गए और गेंद उनकी नी रोल के आगे लगी। अब अमूमन ये जब इतने नीचे लगती है गेंद, तो गेंद जो है स्टंप्स के ऊपर से जाती है, बट यहाँ पर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं, सीधा लेग स्टंप को जाकर लग रही थी। और एक अच्छा रिव्यू मैं भारत की तरफ से नहीं कहूंगा, मैं रवि बिश्नोई की तरफ से कहूंगा, क्योंकि रवि बिश्नोई एक्चुअली चाह रहे थे, डिमांड कर रहे थे रिव्यू। लेकिन संजू सैमसन जो विकेट कीपर है वो कह रहे थे कि नहीं बेटा शायद ये डाउन द लेग साइड जाएगी, और जसप्रीत बुमराह भी संजू सैमसन की तरफ से बोल रहे थे कि शायद हमें नहीं देना चाहिए, बट नहीं, रवि बिश्नोई जिद पर अड़े थे, और कभी कभी जिद एक अच्छी चीज होती है। बैरी मैकार्थी नए बल्लेबाज 59 पे 6 आयरलैंड। जी हाँ, और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो रिव्यू की ज्यादा यहाँ पे प्रशंसा की गई है रवि बिश्नोई की, क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्हें पता था कि ये आउट होने वाला है। और जी हाँ, ये एक अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन मैं कहूंगा, और एक अच्छे सेंसिबल बॉलिंग का प्रदर्शन मैं कहूंगा। वो बॉल को देख रहे हैं कि कहा जा रही है आफ्टर डिलीवरी एज वेल, तो वो काफी एक अच्छी स्किल यहाँ पे रवि बिश्नोई ने शायद अक्वायर की है, और अच्छी कप्तानी भी मैं कहूंगा यहाँ पे जसप्रीत बुमराह की, अपने बॉलर को वो ट्रस्ट दिखाते हुए। और ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि जब आपका बॉलर आपका एक कप्तान एक बॉलर होता है, तब वो समझ सकते हैं कि कितनी बार जब हमें लगता है हम विकेट ले रहे हैं, तब हमारे कप्तान हमारे साथ रहते नहीं है। और ये एक अच्छी चीज हमें दिखाई दे रही है। छठा विकेट जा चुका है यहाँ पे, 59 रन ऑन बोर्ड है, और रवि बिश्नोई काफी सक्सेसफुल स्पेल डालते हुए उनकी तीसरी ओवर की हुई समाप्ति, 2 विकेट हो चुके हैं 14 रनों पे, 59 फॉर 6 है आयरलैंड की टीम। चलिए शौर्य, जिद की बात करते हैं, सनी देओल वाली जिद नहीं, लेकिन जिद। अभी जैसे कह रहे थे कि मैं कह रहा था कि कभी कभी जिद अच्छी होती है। यहाँ पर रवि बिश्नोई ने एक जिद यहाँ पर ठानी थी कि नहीं ये आउट है और मुझे रिव्यू चाहिए, और यहाँ पर भारत को फायदा हुआ। आपको ऐसा कुछ अपनी निजी जिंदगी में याद है जहां पर आपने अपने पेरेंट्स से या फिर अपने दोस्तों से या किसी से भी ऐसे जिद पे ठानी हो? क्योंकि अमूमन क्या होता है ना कि हम जब युवा अवस्था में होते हैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं हूं, लेकिन हम जब अमूमन युवा अवस्था में होते हैं तब आप हंस क्यों रहे? मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को युवा मानता हूँ, उसमें कोई खराबी है क्या? आपको मैंने कोई जोक नहीं मारा यहाँ पर जो आपको हंसी आ रही है। चलिए, बिलीव करता हूँ आप पे। चलो अच्छी बात है। तो कभी ऐसा, क्योंकि युवा अवस्था होती है ऐसी जहां पर हम जिद करते हैं और हमें दूसरों की बातें समझ में नहीं आती कि वो जिद अच्छी है या नहीं। आपने कभी ऐसी कोई और अमूमन 10 साल बाद हमें ऐसा लगता है कि हमें उस बात की जिद नहीं करनी चाहिए थी। कभी ऐसा आपको लगा है आज की जिंदगी में कि शायद अगर आपने उस बात की जिद की होती थोड़ी और, तो शायद आज आप कुछ अलग होते, या फिर आपने वो जिद की और आपकी जिद मान ली गई और आज आपकी जो जिंदगी है पूरी तरह से काया पलट हो गई उस जिद की वजह से? जी हाँ, मतलब मेरे अगर थोड़ा पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है, पर मेरे माता पिता मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। नीट की एग्जाम भी मैंने दी थी और मैंने क्लियर भी की थी, पर मेरी जिद थी कि मुझे बीएमएम करना है और मुझे जर्नलिज्म और स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग में मेरे काफ़ी रुचि है। तो मैंने वो जिद की, और अगर मैं वो जिद नहीं करता तो शायद मैं यहाँ पे बैठा नहीं होता, शायद मैं कोई ऑपरेशन कर रहा होता। पर खैर बच गए ना वो पेशेंट बच गए। तो वो एक जिद शायद पता नहीं मुझे कहाँ लेके जाएगी। मैं काफी युवा, अपने आप को मैं जरूर युवा कह सकता हूँ यहाँ पे, और मुझे उस बात में बिल्कुल हंसी नहीं आ रही है। हाँ, तो मैं जरूर कह सकता हूँ कि पता नहीं वो कहाँ पे लेके जाएगा। आई होप अ लॉट मोर ऑफ माय लाइफ इज लेफ्ट हियर, और देखना पड़ेगा यहाँ पे रवि बिश्नोई की भी वो जिद एक काम करके लेके गई उन्हें। क्या मैं ये सवाल आपको भी पूछना चाहूंगा, आपका काफी एक्सपीरियंस लाइफ रहा है, तो आपकी कभी एक जिद आपके साथ गई हो जहाँ पे आपके पेरेंट्स, आपके कोलीग्स आप पे विश्वास नहीं कर रहे थे, पर फिर आखिरकार आप सही निकले?
हुआ है कई बार ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं थोड़ा अलग ही सोचता हूँ, ऐसे मेरा मानना है। दुनिया थोड़ी अलग, जैसे कि अभी मैंने कहा कि मैं अपने आप को युवा मानता हूँ और आपने उस पर ही कील ठोक दी ये कहकर के आपकी तो काफी एक्सपीरियंस लाइफ है। तो अमूमन युवा पीढ़ियों की इतनी एक्सपीरियंस लाइफ तो होती नहीं है, तो जो सुनने वाले हैं तो वो क्या समझेंगे मेरे बारे में। मैंने आपको युवा नहीं कहा, ऐसा नहीं है, आप युवा जरूर है पर एक्सपीरियंस युवा है। ओके, एक्सपीरियंस हुआ, ये सुनने को अच्छा लगा। नहीं, वो एक ही बात है कि मेरी जिद थी कि मैं कैसे भी करके स्पोर्ट्स में आऊँ, स्पोर्ट्स में आना जरूरी, जैसे कि आप चाहते हैं, जैसे हर माँ बाप चाहते हैं, खास करके इस देश में, कि उनके बच्चे जो हो या तो डॉक्टर हो या तो इंजीनियर हो या तो एक ऐसे मकाम पे हो जहाँ पे लाइफ सक्सेसफुल बने। पर हमारी जो सोच रहती है, हम उस पीढ़ी में या उस अवस्था में हमारे सक्सेस के बारे में नहीं सोचते। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें मजा कहाँ पे आएगा। और जब आप मीडिया लाइन चुनते हैं, चाहे आप जर्नलिस्ट हो, प्रेस में हो, या फिर एक राइटर हो या जो भी हो, सोशल मीडिया पे भी काम कर रहे हो, कमेंटेटर हो या जो भी हो, तब आप सक्सेस के बारे में नहीं सोचते। आप सिर्फ ये सोचते हैं कि आप जो गेम कवर कर रहे हैं, क्या आपको वो गेम कवर करके मजा मिल रहा है क्या। और मैं मानता हूं कि मुझे ये मजा मिल रहा है। तो इन माय केस डेफिनेटली मैंने जो जिद रखी थी, वो उस जिद पे मैं आज भी अड़ा हूं, आज भी मैं कायम हूं, क्योंकि मैं ये नहीं सोचता कि मैं जिंदगी के किस मकाम पे खड़ा हूं। मैं सिर्फ ये सोचता हूं कि मुझे जो काम कर रहा हूं उसमें मुझे मजा आ रहा है या नहीं। 64 for 6 then as Ravi Bishnoi comes on to bowl his to finish off his quota of 4 overs. It seems like the rain has gone, or it is definitely lessened down a touch, because the cameras are looking brighter now. Now, flighted delivery outside the off stump, hammered straight back to the bowler, who tries to stop it, but kind of fumbles. It's a very good stop. That would have been a boundary down the ground. But Bishnoi now says, it's cold as well, and when you get hot and it's cold, that stings. It's actually a very, very good effort from Ravi Bishnoi, hammered back. And just to give you an idea about Ravi Bishnoi, well, he and Yashasvi Jaiswal are a part of the same team which represented India in the 2020 Under-19 World Cup final against Bangladesh. And now this is lofted in the air. Has this cleared long gone? You bet it has, because long gone has already turned back and looked at where the ball is landing in the crowd. So, well, the first 6 is it for Ireland in this game. Yes, they have scored just 6 fours and 1 6. And the first 6 has come from the bat of Barry McCarthy, the googly. And I want to talk about that match as well, that Under-19 World Cup final. Yashasvi Jaiswal scored a brilliant 74. And Ravi Bishnoi actually got India back into the game with some late wickets. But unfortunately for India, the moment Yashasvi Jaiswal got out, India collapsed. And then Ravi Bishnoi didn't get support from the other end. He was the only bowler who was doing well in that game. So, but he'll be proud that he could represent India in a World Cup final, even if it is under 19. He may not be a part of the upcoming ODI World Cup, but I am seeing him to be a part of the 2024 T20 World Cup. The ball has come back, but I am kind of seeing Jasprit Bumrah grimacing, because Ravi Bishnoi has his hands in his pocket. And if I read Bumrah's mouth, I mean, I'm not a lip reader, but I think he said to someone, "Thoda zyada ho gaya hai." I think it's about the rain that is stopping, because I'm seeing fresh droplets of rain. 71 for 6 are Ireland. Yes, and the rain again being a major issue in this game. Ravi Bishnoi not liking the weather whatsoever. He is keeping his hand inside the pocket, and yes, the rain with the coldness. Yes, it's summer there, but the coolness becomes a big issue as most of the players have been accustomed and habituated to the Indian subcontinent. And Ravi Bishnoi, coming from the Caribbean summer, it would be a really tough task to him to be accustomed and bowl here. And as a bowler, when you're bowling over, you cannot wear your sweater. It gets a tad bit uncomfortable. So it is a tough job bowling 6 deliveries in this certain weather with cold and freezing cool water dropping on your arms and your bare arms, because he's bowling right now. So yes, a tough job for him, and I mean tough job for the batters as well. But Ravi Bishnoi keeping his calm and cool, and a brilliant spell by him comes to an end. 2 wickets for him, 23 runs which he gave away. And the scoreboard now reading 72 for 6 for the Irish team. Yeah, a rare go over for Ireland, because 9 runs came from it. Otherwise, it has been a string of low-scoring overs.
But a bit of a trivia now. Today marks 15 years of Virat Kohli in international cricket, and if you have managed to play 15 years, normally everyone used to marvel at Sachin Tendulkar because he has the longest lifespan as a cricketer playing cricket, international cricket, I would say. Of course, there are people who are like Sir Alistair Cook, who is playing even at James Anderson, even at the age of 41. I'm not talking about that, but to be in international cricket for so long, he made his debut in 1989 and retired in 2013. So that's a good 24 years of experience. And I'm sure, Shaurya, that you would be a fan of Virat Kohli. But if you could, not technically, but if you could help us understand how or whether Virat Kohli has got the fan in you to love the sport or just love the individual. I mean, Virat Kohli as a player has been the youth. I mean, everything just Youth icon, you mean? Youth icon, and what the new India wanted. I mean, cricket was always the sport that has been the gentleman's game till the 2000s. I mean, it was sort of Ganguly who kind of changed that image for the Indian squad. Before that, Indian cricketers were known to be very gentlemanly, talking in proper English, and they were the ones who were be respected, and they had a dignified image. But Virat Kohli came in with his whole Delhi personality, I would say, and he just showed that you can be you while being on the top of the form, and the personality of that as a big cricketer, and with such amount of talent which you have, there comes in another part as well, which is keeping that personality up. And yes, again, talking about the cricket people coming in to watch that game, watch that brilliant performances. I mean, Virat Kohli is the mixture of both. He plays those proper cricketing shots as well as he experiments and he goes for the bigger hits. I feel he's the perfect mixture of T20 and Test, and that had just brought in a lot of fans. And with that great personality, I mean, it is just a perfect cricketing star, I would say. I actually kind of have a debate on that. Meanwhile, there is a communication breakdown between Ravi Bishnoi and Jasprit Bumrah because it was a short ball on leg stump. First, I'll describe the ball. Camphor got across and pulled this over a short fine leg. Now, Jasprit Bumrah initially did not run. He thought Ravi Bishnoi will get to the ball from fine leg. So he gave up the chase, and suddenly he saw Ravi Bishnoi had a long distance to cover. So he started running. But then eventually Ravi Bishnoi got to the ball and he has pulled out a spectacular save because he's actually saved the ball. And then the joke was he's telling Bumrah, "Arey, aap batate to sahi ki aap bhag ke aa rahe ho." But unfortunately for Bishnoi, the ball has rolled back and touched the ropes. He's actually telling Bumrah, "Aap batate to sahi ki aap aa rahe ho, to main nahi marta dive." But it is good to see. So my debate around Virat Kohli was, well, it's great that when we say you make some statements, you need to walk the talk. And he has walked the talk. But I always believe that cricket should be a gentleman's game. We should live up to that. And sometimes I feel that Virat Kohli, and even now some of the youngsters in the Indian camp, just kind of overdo that aggression. If someone is putting you down and you give it back, it's something different. You're returning the favor, as they say. But is it necessary to go and sledge players unnecessarily? And no excuse can and sound fair. You can't be saying that the Aussies do it, the English do it, the Kiwis do it. Well, that's why we are Indians, aren't we? Because we embodify the statement that cricket is truly a gentleman's game, and at the end of the day, you want people to come and respect the sport. You don't want people to start giving abuses needlessly at someone else just so that he gets mentally disturbed. So that is the only thing which I would kind of debate. But otherwise, hats off to him. In spite of being so aggressive, he has managed to translate that into his performance. So in terms of performances, he has been top notch. In terms of captaincy, he has been the reason why India have done so well overseas. And also, I have noticed one thing: he might be sledging other people when he is fielding, but when he is batting and someone else sledges him, he doesn't return, he doesn't give it back. He's very focused, very calm, and he knows that he has a job
on hand. So yes, congratulations, Virat Kohli. But to all those who are listening, where we are open to debates, if you feel that what me or Shaurya are saying is kind of overworked, well, we are happy to discuss about that. Just our personal experience, personal opinions, nothing else. There's nothing right or wrong in that. I believe both of us are right in our own way, and because for a guy like Shaurya, like Virat Kohli has been that legend whom you would like to look up to. For me, come through the era of Rahul Dravid, Sachin Tendulkar, who have been those legends. Because yes, having said that, they have faced so much injustice from their opponents. Because I have seen Glenn McGrath and many other, even Alan Donald, countlessly sledging Rahul Dravid and Sachin Tendulkar. And trust me, well, we used to feel as fans, we used to feel angry that why aren't you giving them back? But then I think both these gentlemen used to say, "Mera balla bole," and my back will talk, and they never sledged people. Even Courtney Wall. So we have seen those people, and now to see these players. However, I think what Virat Kohli did was not exactly a replica of what today's generation is doing. I think today's gen is taking it a bit too far, because they are needlessly sledging other people, and it's being visible almost everywhere. And there was this incident where we saw in the Lanka Premier League as well, Hassan Ali doing it, Kusal Mendes doing it, Chamika Karunaratne doing it. And at the end of the day, you as an audience are coming to watch the sport to enjoy yourself. I am not sure you will enjoy if people are just wrestling at one another and hurling abuses. Yes, no disrespect to boxing, no disrespect to WWE, but they are a different sport altogether, and cricket probably is a bit softer. 85 for 6 as McCarthy comes down the track and pulls it over a leaping short mid wicket for a boundary, and this partnership is kind of giving a little bit of life to this Irish innings. Yes, and that has been the case, and I agree to you with this pledging point. But I mean, Virat Kohli as a personality, if we see, there has been an arc for him. Yes, he started off quite early, but he used to start off with the sledging terms and everything. But as a captain, it was far and far off that we saw that aggression a lot on that field. That reduced quite so well. And I mean, Virat Kohli has a gentlemanly side as well. So I think he respects all of it, and he does everything at the same time. And this is what the generation wanted, and that has made him become that true legend. And that has been the case. And now, as you've said, the Camphor is batting quite so well with McCarthy right now, and 86 runs on the board for the Irish side. And this partnership is quite being so well. And Camphor is just doing a brilliant job of anchoring this innings to some solace, as 86 for 6 is not at all ideal when you are ending your 15th over. And this is the last ball of the 15th over, which would be a dot. But he's doing a great job if we compare it to the other batters who came in. Yes, it is 86 for 6 after the 15th over. Ads कितने annoying होते हैं ना? But do you know what's not annoying? My show called From the Archives, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा. कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मोर. एनीवेज, कंटिन्यू टू एंजॉय व्हाट यू विल. हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा. आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिकॉन्ग ऐप. क्रिकॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट की 2 ओवर शुरू में और अब 2 ओवर आखिर में आ गए हैं. जसप्रीत बुमराह अपना तीसरा ओवर लेकर पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर. वो इसलिए क्योंकि कर्टिस कैम्फर, माफ कीजिएगा, बैरी मैकार्थी ने अपने तीनों स्टंप्स दिखा दिए थे, इसलिए उन्हें फॉलो किया जसप्रीत बुमराह ने. और मैकार्थी ने कदमों का इस्तेमाल भी किया, आगे आए और पंच कर दिया डाउन द ग्राउंड, जहां पर रिंकू सिंह ने मिड ऑफ से आकर एक अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया. 1 रन वहां पर बढ़ता हुआ स्कोर को 87, 6 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर आयरलैंड. और अगर हम मैच के बारे में बात करें, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने काफी सारी चीजें बोल दी, बट फ्रॉम आयरलैंड पॉइंट ऑफ व्यू एटलीस्ट वो ये कोशिश करेंगे कि कम से कम या आखिरी 5 ओवर में वो 120, 130 तक तो ट्राई करें,
पहुंचने के लिए, ताकि भारत के पास कुछ तो टारगेट हो बैटिंग करने के लिए। और आप भी अपने देश के लिए खेल रहे हैं तो आप अपने देश का नाम भी रोशन करना चाहेंगे। और चलिए, आपके लिए ये शुरुआत अच्छी नहीं रही है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप रन बनाना ही छोड़ दें या फिर कोशिश ही ना करें। कम से कम एक बाउंड्री प्रति ओवर यहाँ से तो हो सकता है आप 130 और 140 के बीच आप पहुंच सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से फुल टॉस, आपको खराब गेम पर प्रहार करना ही है, और उस पर प्रहार कर दिया वहां पर कर्टिस कैम्फर ने। उसे दिशा दे दी कवर के बाएं तरफ, लेफ्ट साइड, और गेंद सीमा रेखा के बाहर पहुंच गई 4 रनों के लिए। 91, 6 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर आयरलैंड। ये साझेदारी अब पहुंच चुकी है 32 रनों पर धीमी साझेदारी 30 गेंदों में, लेकिन जिस तरह से विकेट्स गिर रहे थे उस हिसाब से उन्हें पहले विकेट्स को रोक के रखना था, और अब शायद वक्त आ गया है जहां पर वो अपने हाथ खोले। जी हाँ, अभी हाथ खोलने की सिचुएशन जरूर आ गई है, स्पेशली कैम्फर पे, क्योंकि वो एक बढ़िया लय में दिख रहे हैं और वो लय कंटिन्यू करेंगे। इस बार जसप्रीत बुमराह को मिड विकेट की तरफ पहुंचा दिया है एक बेहतरीन छक्के के लिए, और जसप्रीत बुमराह थोड़े से नाखुश दिख रहे हैं उस शॉट के बाद। और कैम्फर 35 ऑफ 25, उन्होंने शुरुआत काफी धीमी की। पहले कर्टिस कैम्फर जो थोड़े स्लोली खेल रहे थे, थोड़े एक्सपेरिमेंटल शॉट्स के लिए भी गए, पर अभी वो जो लय उन्होंने पकड़ी है वो काफी बेहतरीन है, क्योंकि इसके पहले का बॉल एक चौका जो जसप्रीत बुमराह की एक बीमर डिलीवरी थी, और शायद उनके गेंद से हाथों से गेंद छूटी, पर इस बार आउटसाइड दी ऑफ डालने की कोशिश की और कैम्फर ने एक बढ़िया प्रहार करते हुए देखिए इस बार एक शॉर्टर डिलीवरी जसप्रीत बुमराह की काफी तेज डाली उन्होंने। ये डिलीवरी 139 kmph की स्पीड, तो काफी तेज तरार गेंद। ये इस बार हुक करने की कोशिश की, वो जो स्पीड है उसका फायदा उठाना चाहते थे कैम्फर, पर टाइम नहीं कर पाए और केवल एक डॉट होगा यहाँ पे। 97 फॉर 6 पे पहुंच गई है आयरिश टीम, और 100 तो पास में है, और कितने और ऐड करेंगे यहाँ पे। स्लॉग ओवर्स की तरफ पहुंच गए और कैम्फर और मकाती दोनों एक अच्छी लय, एक अच्छी इनिंग्स की तरफ रुख ले रहे हैं। और यहाँ पे जसप्रीत बुमराह अपनी लाइन लेंथ मिस करते हुए, काफी डिफरेंट ओवर है उनकी अगर हम कंपेयर करेंगे उनके पहले के ओवर, जहाँ पे पहले ओवर में तो 2 विकेट चटकाए थे, उसके बाद दूसरी ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी की, बॉल को काफी तेज तरार से डाला, पर अभी लाइन और लेंथ मिस करते हुए जसप्रीत बुमराह थोड़े नाखुश हो गए ये आखिरी गेंद से। और अभी देखना पड़ेगा कि क्या करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं यहाँ पे। जी हाँ, बैटर की तरफ डाली ये गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप से मिडिल स्टंप की तरफ ट्रैवल किया इस गेंद ने, और एक सिंगल लेके ओवर की समाप्ति। 16 ओवर हो चुके हैं खत्म। 99 फॉर 6 है आयरिश टीम। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में, और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, scores and much more. Anyways, continue to enjoy what you will. हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा। आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिकॉन्ग ऐप। क्रिकॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा। एनालिसिस तो मिलेगी, फैंटेसी पिक्स भी मिल जाएंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, डाउनलोड कीजिए द क्रिकॉन्ग ऐप और सुनते रहिए। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है यश पाठक। क्रिकॉन्ग पर आप सभी का स्वागत है। इस ऐप पर दोस्तों आपको मिलेगा आंखों देखा हाल, क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है उसका। 16 ओवर के बाद 99, 6 विकेट के नुकसान पर, और अब आ गए हैं पूरे 100। लेग स्टंप पर धीमी गति की गेंद और उसे फ्लिक कर दिया है कर्टिस कैम्फर ने डीप स्क्वायर लेग की तरफ 1 रन के लिए। और इसी के साथ आयरलैंड के 100 रन पूरे। जिस हिसाब से उनकी बल्लेबाजी चल रही थी, डेफिनेटली उन्हें तालियों की जरूरत है, और जो क्राउड है वो उन्हें सपोर्ट कर रही है। जी हाँ, हम मानते हैं कि इतना ये जो है ये स्कोर काफी नहीं होने वाला है इंडियन बैटिंग लाइनअप के लिए, पर अगर हम ये सोचे कि किस तरह से उनका टॉप ऑर्डर धराशायी हो गया था,
जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा के अगेंस्ट और रवि बिश्नोई के अगेंस्ट, उस हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन कमबैक है। और इसी बीच अगली गेंद स्टंप्स पर फुलर लेंथ की गेंद और बैरी मैकार्थी ने आगे आकर अपने आप को रूम दिया लेग साइड पर और उसे ड्राइव कर दिया कवर्स की दिशा में 4 रनों के लिए। 104, 6 विकेट के नुकसान पर अब पहुंच गई है आयरलैंड। चलिए हम आपको फॉल ऑफ विकेट बताते हैं। 4 पर गिरी थी पहली विकेट, 4 पर गिरी थी दूसरी विकेट भी, 27 पे तीसरी विकेट, 27 पे चौथी विकेट, 31 पे पांचवी विकेट और 59 पे 6 विकेट। तो अगर हम 31 फॉर 5 से कहें कि ये 104 फॉर 6 तक पहुंच गए हैं तो डेफिनेटली एक कुछ तो उन्होंने फाइट दिखाई है। अब वो आगे जाके मैच में क्या रिजल्ट आता है वो उनके हाथ में है नहीं, वो तो सिर्फ परफॉर्म कर सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं। और फिलहाल ये जोड़ी वही कर रही है इस पार्टनरशिप में 41 रनों को जोड़कर। और इस बार गेंद हवे में, क्या लॉन्ग ऑन यहाँ पर कैच पकड़ पाएंगे? जी नहीं, यशस्वी जायसवाल वहां पर थे पर वो यशस्वी नहीं हो पाए उस कैच पकड़ने की कोशिश में। इनफैक्ट उन्होंने कोशिश ही नहीं की और लेंथ गेंद थी मिडिल स्टंप पर, आगे आकर मैकार्थी ने उसे लॉफ्ट कर दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। और वहां पर यशस्वी जायसवाल मौजूद थे जरूर पर उन्होंने सिर्फ उस गेंद को अपने सर के ऊपर से जाते हुए देखा। और इसी के साथ जो है इस ओवर, पिछले ओवर में आए थे 13 रन और इस ओवर के पहले 3 गेंदों में आए हैं 11 रन। 110, 6 विकेट के नुकसान पर अब आयरलैंड पूछ रही है, अब आयरलैंड बात कर रही है 21 गेंद। क्या इन 21 गेंदों में मुमकिन है कि वो 150 के आसपास पहुंच जाएं? जी हाँ, अभी जिस फॉर्म में मैकार्थी और कर्टिस कैम्पर लग रहे हैं, लग तो ऐसा रहा है कि वो हर गेंद को बाउंड्री के पार और हाँ सॉरी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, वो उस छक्के के साथ इन दोनों के बीच की साझेदारी हो गई है 50 और वो 50 की साझेदारी से 36 गेंदों में आई है। तो उनके लिए, क्योंकि आज आयरलैंड का दिन नहीं रहा है, एक रेयर मोमेंट ऑफ जॉय उनके लिए। थोड़ी तालियां हमारी तरफ से भी फॉर शोइंग सम फाइट। जी अभी आप क्या कह रहे थे शौर्य? जी हाँ, और अभी जो कर्टिस कैम्पर और मैकार्थी का प्लान है वो है कि हर गेंद को हम बाउंड्री की तरफ मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वही एक आइडिया दिख रहा है उन दोनों की तरफ से। और बैरी मैकार्थी जो काफी अच्छे लय में शुरुआत से ही आए हुए हैं, 27 रन, और वो वही कर रहे हैं। देखिए इस बार लेंथ डिलीवरी वापस थी और इस बार थोड़ा पेस बढ़ाया यहाँ पे कृष्णा ने और यहाँ पे वापस स्विंग किया बल्लेबाज ने, पर वो स्विंग कुछ काम का नहीं रहा। और यही एक रिस्क जरूर होगा दोनों के लिए, क्योंकि इफ ये दोनों बल्लेबाज दोनों में से कोई भी एक यहाँ पे विकेट खो देता है तो जो मोमेंटम यहाँ पे जो आयरलैंड की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है वो भी बंद हो जाएगा। यहाँ पे काफी तेज तरार उन्होंने बैटिंग की है यहाँ पे पार्टनरशिप में, और इस बार वापस थोड़ी रूम दे दी मैकार्थी को यहाँ पे कृष्णा ने, और उसका खामियाजा जरूर भुगतेंगे। इस ओवर की आखिरी गेंद को कवर्स की तरफ एक बेहतरीन 1 बाउंस गॉन फॉर 4, एक बेहतरीन चौका, और 114 पे 6 है आयरलैंड की टीम। और यहाँ पे हुई 16वें ओवर की समाप्ति, 17वें ओवर की समाप्ति। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, scores and much more. Anyways, continue to enjoy what you will. हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा। आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिकॉन्ग ऐप। क्रिकॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो 16वें ओवर में 13 रन, 17वें ओवर में 15 रन, पिछले 2 ओवर में 28 रन आ गए हैं। और यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ी बहुत मोमेंटम पिक जरूर कर रही है आयरलैंड। ये अलग बात है कि जितना भी वो बनाएंगे हमें ऐसे ही लगेगा कि बहुत कम है, क्योंकि पहले 6 ओवर में आए थे 30 रन और 4 विकेट, अगले 9 ओवर में आए 56 रन और 2 विकेट, लेकिन उसके बाद जो है पिछले 3 ओवर में आए हैं 28 रन। तो वो जरूर 2 ओवर में आए हैं 28 रन
और यहाँ पर अर्शदीप सिंह वापस आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद एक डॉट बॉल थी, दूसरी गेंद पर मिडिल स्टंप पर और उसे फ्लिक कर दिया है रवि बिश्नोई की तरफ डीप मिड विकेट की दिशा में। 2 रन 116, 6 विकेट के नुकसान पर आयरलैंड। और चाहे इस मैच का निर्णय कुछ भी हो, इनकी फाइट को हमें सराहना जरूर करनी होगी, क्योंकि जैसे कि हम कह रहे थे या मैं कह रहा था कि इनका टॉप ऑर्डर तो है ही नहीं, इनकी बैटिंग तो मिडिल ऑर्डर से चल रही है। और ये देखिए 59 फॉर 6 से उन्होंने इधर तक वो लोग लेकर आए, 31 फॉर 5, 59 फॉर 6। और उस टाइम पे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये लोग पहले तो 20 ओवर पूरा खेलेंगे, अब एटलीस्ट ऐसा लग रहा है कि ये लोग 20 ओवर खेल सकते हैं। हाँ, क्या वो 140 150 पहुंच सकते हैं कि नहीं, ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने पिछले 2 ओवर में 28 रन स्कोर किए हैं। इवेंचुअली हर मैच जो है, ऑफ कोर्स कोई भी टीम हारने के लिए नहीं खेलती, लेकिन हर मैच जीत और हार के नहीं होती। कोई मैचेस, कई बार हम ये देखते हैं कि आपका प्रयास कैसा है और आपका साहस आपने कितना दिखाया है। आप एक वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड बीटिंग टीम के साथ आप खेल रहे हैं, तो उसमें आप अपने हिसाब से किस तरह से आप अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। 31 फॉर 5 से आप आराम से 80 ऑल आउट हो सकते थे, 60 ऑल आउट हो सकते थे, लेकिन नहीं, आपने थोड़ी बहुत यहाँ पर जान फूकी है मैच में। भले ही स्कोर कम है, लेकिन एटलीस्ट अपने देश के लिए आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि हाँ, हम यहाँ पे मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे लड़ने के लिए आए हैं। और भले ही हम हार जाएं, पर मेहनत करते करते, फाइट करते करते हारेंगे। जी हाँ, और यहाँ पे अगर जो आयरलैंड के बॉलर्स है वो इस पार्टनरशिप को बैक करते हैं, तो थोड़ी फाइटिंग स्पिरिट दिखाने की यहाँ पे कोशिश करेगी आयरलैंड, क्योंकि यहाँ से अगर 130 140 भी पहुंचा देती है ये पारी, तो एक चेजेबल टोटल होगा। पर मैं मेरे इस पारी की यहाँ पे समाप्ति होते हुए शायद मैंने जिंक्स कर दिया इस पारी को। पर खैर, एक बड़ा विकेट अर्शदीप सिंह को मिलते हुए एक प्रॉपर यॉर्कर डाली उन्होंने और विकेट को चटकाया, मिडिल स्टंप को ही चटका दिया है उन्होंने। और कर्टिस कैम्फर 39 ऑफ 30, काफी अच्छी इनिंग्स उनकी रही है, 1 छक्का 3 चौके और एक अच्छा कैमियो तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप पर्सपेक्टिव में देखें दूसरे बल्लेबाजों को, तो वो तो सिंगल डिजिट्स में ही देख रहे थे। और यहाँ पे एक अच्छी पारी की हुई समाप्ति, काफी अच्छे पोजीशन पे उन्होंने आयरलैंड को लाया है, और मैं उनकी यहाँ पे सहानुभूति ही करूंगा, क्योंकि एक अच्छी पारी की हुई यहाँ पे समाप्ति। जी, 116, 7 विकेट के नुकसान पर, क्योंकि 59 फॉर 6 थे वो, और उन्होंने 57 रन जोड़े हैं, ऑलमोस्ट उन्होंने डबल जोड़े हैं इस साझेदारी में। तो मैं कहूंगा भारत के लिए कुछ दिया है चेस करने के लिए, नहीं तो ये शायद एक 80 या 90 का स्कोर होता था और वो एक टोटली वन साइडेड मैच हो जाता था। अभी भी वन साइडेड ही है, बट एटलीस्ट वो स्कोर को देख के एक रेस्पेक्ट आती है आयरलैंड की तरफ कि चलिए आपके पास प्लेयर्स हैं जो ये फॉर्मेट खेल सकते हैं। क्रेग यंग आए हैं नए बल्लेबाज, यहाँ पर 18वीं ओवर की आखिरी गेंद का सामना करने के लिए बेहतरीन ओवर रहा है अर्शदीप का, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, लेंथ गेंद, उसे वापस बैक टू द बॉलर डिफेंड कर दिया। क्या बेहतरीन ओवर था, 5 डॉट बॉल्स जिसमें 1 विकेट और एक बॉल पे उन्होंने 2 रन दिए। 18 ओवर की समाप्ति के बाद आयरलैंड 116, 7 विकेट के नुकसान पर, अब शायद 150 तो खिड़की के बाहर है, मे भी 130 और 140 के बीच में वो पहुंचा सकते हैं, ये उनकी कोशिश रहेगी। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, scores and much more. Anyways, continue to enjoy what you will. हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा, आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिकॉन्ग ऐप। क्रिकॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा, एनालिसिस तो मिलेगी। जसप्रीत बुमराह डालेंगे 19वां ओवर और हम अज्यूम कर रहे हैं कि अर्शदीप सिंह डालेंगे 20 ओवर। तो भारत की तरफ से क्या यहाँ पर रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन हुई थी? जब हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहे थे वेस्ट इंडीज में, हमारी काफी आलोचना थी कि रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन नहीं हुई थी। तो प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर 32 रन 2 विकेट, रवि बिश्नोई 4 ओवर 23 रन 2 विकेट, शिवम दुबे 1 ओवर 6 रन कोई विकेट नहीं,
और वॉशिंगटन सुंदर 3 ओवर 19 रन, कोई विकेट नहीं। मे भी यहाँ पर एक आर्गुमेंट हो सकता था कि क्या वॉशिंगटन सुंदर को 4 ओवर दिए जा सकते थे और क्या शिवम दुबे को गेंदबाजी देने की जरूरत थी। मेरे हिसाब से शिवम दुबे को लाया ही इसलिए था क्योंकि बारिश गिर रही थी और उसके बाद जब बारिश थोड़ी सी रुक सी गई तब बुमराह ने वॉशिंगटन सुंदर को लेके आए। तो ठीक है, अदर देन दैट काफी अच्छी कप्तानी रही है, एक बॉलर्स कैप्टन रहे हैं वो, गेंदबाजी तो अच्छी रही ही है एंड ओवरऑल एक यहाँ पर एक अच्छा प्रदर्शन भारत की तरफ से फील्ड पर उन्होंने शुरुआत की थी बिल्कुल दमखम के साथ, दूसरे गेंद पर विकेट चटका दिया। अब यहाँ पर स्लोअर पे स्लोअर गेंद डाल रहे, 3 बैक टू बैक स्लोअर डिलीवरीज बुमराह का और सारे के सारे बॉल्स पर एक ही शॉट अटेम्प्ट किया है बैरी मैकार्थी ने कि उठा के पटक दे मिड विकेट के ऊपर, पर तीनों के तीनों बॉल्स पे उन्होंने कनेक्ट ही नहीं किया है। एक ऑफ स्टंप के बाहर से गई, एक और 2 ऑफ स्टंप के ऊपर से गई है और फायदा भारत को हुआ है। 3 लगातार डॉट बॉल, 116, 7 विकेट के नुकसान पर स्कोर थम सा गया है। आखिरी 9 गेंदें शेष है इस पारी में और बुमराह अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं, वो स्ट्रेसफुल बुमराह नहीं दिख रहे हैं जिन्हें शायद दुनिया भर का बोझ हो अपने कंधे पर बस उनका एक ही एम है। वो इस टाइम जब बॉलिंग कर रहे हैं तो कैप्टन नहीं है, जब बॉलिंग कर रहे हैं तो बॉलर ही है और एज अ बॉलर उनका एक ही काम है कि आकर विकेट चटकाने की कोशिश करना और एक अच्छी गेंदबाजी करना, जो मैं समझ रहा था हार्दिक पांड्या नहीं कर रहे थे एज अ कैप्टन। वो एज अ बैटर भी एज अ कैप्टन ही समझ रहे थे क्योंकि ये जरूरी नहीं है एज आप वो कैप्टनसी का रोल आप तभी रखें जब भी आप फील्ड में हो और आप बॉलर्स को डायरेक्ट कर रहे हो, फील्ड प्लेसमेंट्स कर रहे हो, लेकिन जब आप बॉलिंग कर रहे हो या बैटिंग कर रहे हो तब ये जरूरी है कि आप वो रोल को निभाएं। आप एक साथ दोनों रोल निभाने की जरूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज जसप्रीत बुमराह कैप्टन है उसका मतलब ये नहीं कि वो हर मैच में 5 ले लें। उनका काम है आकर अच्छी गेंदबाजी करना और एक कोशिश करना कि बल्लेबाज को रोक के रखा जाए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी एक बार फिर से क्रेग यंग ने अपने आप को रूम दी लेग साइड पर और बुमराह ने इनको फॉलो किया, यॉर्कर डाली लेग स्टंप के बाहर और क्रेग यंग चूक गए। शायद यहाँ पर एक ही चीज थी, अगर आप यॉर्कर डाल ही रहे थे स्टंप्स पे डाल देते तो वो शायद क्लीन बोल्ड हो जाते यहाँ पर क्रेग यंग। पर क्या ओवर रहा है ये, डॉट बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल, 1 रन डॉट बॉल, 5 में से 4 डॉट बॉल। इनफैक्ट पिछले 11 गेंदों में 9 डॉट बॉल्स देखने मिले हैं हमें और जिसमें 1 विकेट भी गिरा है। आखिरी गेंद बुमराह की और ये विकेट नहीं हो पाएगी उनके लिए। बेहतरीन इन स्विंगर ऑफ स्टंप के बाहर फुलर लेंथ की गेंद, उसे ड्राइव करने का प्रयास क्रेग यंग की लेकिन गेंद अंदर आई, बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया और स्क्वायर लेग की तरफ चले गए। रन लेने का कोई भी मौका नहीं। बेहतरीन ओवर, सिर्फ 1 रन दिया है उन्होंने इस चौथे ओवर में। इनफैक्ट उन्होंने 3 ओवर में 11 रन दिए हैं और 1 ओवर में 13 रन दिए थे अपने स्पेल में। 4 ओवर में 16 डॉट बॉल, यानी 24 गेंदों में 16 डॉट बॉल, 24 रन और 2 विकेट। बेहतरीन जसप्रीत बुमराह, वेलकम बैक टू इंटरनेशनल क्रिकेट और आपके लिए हमारी तरफ से यहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट। जी हाँ, और यहाँ पे अर्शदीप सिंह, जैसे आपने कहा कि अर्शदीप सिंह जरूर आखिरी ओवर डालने की कोशिश करेगा और उन्हें ही कप्तान ने दी है ये आखिरी ओवर। और पहली गेंद एक सिंगल लेते हुए यहाँ पे बल्लेबाज और बैरी मैकार्थी का ये बेस्ट स्कोर है जो उन्होंने अभी तक किया है, 33 नॉट आउट। इसके पहले साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने 32 रन बनाए थे और वो एक पर्सनली एक खुश कंटेस्टेंट रहेंगे इस आयरलैंड स्क्वाड में क्योंकि उन्होंने वो एक अच्छा टास्क किया है, एक अच्छी पार्टनरशिप निभाई यहाँ पे कैंफो के साथ और आयरिश टीम को एटलीस्ट 120 की तरफ नज जरूर किया है। 119 for 7 जरूर है स्कोर, पर 120 होते हुए दिख रहे हैं और पिच की हालत यहाँ पे कुछ अच्छी नहीं दिख रही है क्योंकि हर जगह स्पाइक्स की वजह से थोड़े गड्ढे से बन रहे हैं और कम से कम जो अभी हमने यूएसए मास्टर्स में वो पिच देखी थी उससे तो बेटर है, उससे तो बेहतर ही है पिच। पर फिर भी एक बैटर का काम नहीं होता यहाँ पे गड्ढे भरना, पर वो कर रहे हैं। इस बार मैकार्थी क्लियर करना चाहते थे बाउंड्री, एक बाउंसर थी और उस बाउंसर को अच्छी तरह प्लेस किया है, पुल किया है यहाँ पे मैकार्थी ने एक बढ़िया चौके के लिए और वो चाहते हैं इस ओवर को एक बेहतरीन ओवर में बदलने के लिए। वो शायद
जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट कर नहीं पाए। पहले 3 डिलीवरी उन्होंने जसप्रीत बुमराह की खेली थी, पर बुमराह एक ऐसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी है जो अपनी लाइन और लेंथ को पकड़ के रखने की शैली रखते हैं। यहाँ पे अर्शदीप सिंह थोड़े चूक गए और मकार्थी ने उसे एक अच्छी तरह मैं कहूँगा पनिश कर दिया है। 37 पे पहुंच गया है यहाँ पे, और मोस्टली तो उनका काम नहीं है इतनी बड़ी पारियां खेलना, पर अभी उनने अपनी टीम को एक बड़े प्रॉब्लम से निकाला है। 123 जो स्कोर है वो थोड़ा रिस्पेक्टेबल जरूर है। इस बार वापस वही बाउंसर डाली और काफी ज्यादा हाइट दे दी। जैसे आपने कहा था कार्तिक कि ये पिच में बाउंस काफी ज्यादा दिख रही है, तो आपको वो थोड़ा जांच परख के ऐसी गेंदें डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ये बाउंसर्स डाल देते हैं तो आप थोड़ा और फोर्स डाल देते हैं कंधे से, तो वो बाउंसर एक वाइड में कन्वर्ट हो जाएगी, और यही हुआ। और अर्शदीप सिंह थोड़े एक्स्ट्रा प्रोन रहे हैं उनके इस दिन में, काफी ज्यादा वाइड्स डाले हैं और मोस्टली उनके वाइड्स जो है वो बाउंसर के थ्रू ही निकले हैं, तो उनपे जरा उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। 3 गेंदें बाकी है यहाँ पे। मकार्थी कोशिश जरूर करेंगे कि इस 3 गेंदों में जितना मैक्सिमम स्कोर है उतना ले पाए। अर्शदीप सिंह पहले 2 ओवर्स इतने खासा लाइन और लेंथ में नहीं दिख रहे थे, लय में ही नहीं दिख रहे थे, पर उसके बाद उनकी तीसरी ओवर एक बेहतरीन ओवर थी जहां पे उन्होंने कैफर का विकेट भी लिया था। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में मार दिया था यहाँ पे मकार्थी ने, और फील्डिंग अच्छी थी, थ्रो काफी जल्दी आया, पर अर्शदीप सिंह कलेक्ट करने में नाकामयाब रहे और एक अच्छा कपल ऑफ रन्स लेते हुए यहाँ पे दोनों बल्लेबाज काफी क्विक थे वो दोनों क्रीज के बीच में। लेकिन मेरे हिसाब से रन आउट कर देना चाहिए था। जी हाँ। ये आपने कहा अच्छी थ्रो पावरफुल आया ही, बट ये इंटरनेशनल क्रिकेट है और आप अपना पहला मैच नहीं खेल रहे। आपने काफी सारा इंडियन T20 लीग मैचेस खेले हैं। थ्रो और आपके पास काफी समय था, क्योंकि जो क्रेग यंग थे वो आधे पिच पर ही थे, पर अर्शदीप ने यहाँ पर एक रन आउट का मौका गवाया और इसी अगले गेंद पर वो कहते हैं ना इंसल्ट टू इंजरी, छक्का भी खाया है। शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और से पुल कर दिया बैरी मैकार्थी ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो चलिए आयरलैंड ने 130 का आंकड़ा पार कर दिया है और कम से कम 6.5 का तो रिक्वायर्ड रन रेट दिया है भारत को यहाँ पर चेस करने के लिए। एक शॉर्ट गेंद और उसे पुल कर दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर 6 रनों के लिए। एक्चुअली तभी अर्शदीप ऋतुराज को देख रहे थे और कह रहे थे कि आपने इतने जोर से क्यों फेंका, तो ऋतुराज का सवाल था कि आप क्या चाहते हैं कि मैं लॉन्ग ऑन से आपको टप्पा गेंद थ्रो करूं। और मैं मानता हूं कि मतलब वो लुक तो देना ही नहीं चाहिए था अर्शदीप सिंह को, कि आखिर वो चाह क्या रहे थे। अगर वो चाह रहे थे तो फिर शायद मे भी एक्स्ट्रा कवर या मिड विकेट के फील्डर आकर वो गेंद को पकड़ लेते, बट चलिए आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और आपको ये सब तो भाई दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम और इट्स अ सिंपल रन आउट चांस मिस अर्शदीप सिंह द्वारा। और अगले गेंद पर उन्होंने एक छक्का खा दिया है। आखिरी गेंद इस पारी की जो हम समझ रहे थे शायद 10 ओवर के आगे नहीं टिकेगी, पर इन्होंने पूरे 20 ओवर खेल के ये शायद एक नो बॉल भी होगी, ये शायद एक नो बॉल भी होगी। जी हाँ, स्क्वायर लेग अंपायर ने नो बॉल यहाँ पर दी है। ये मैं मानता हूं अर्शदीप की गलती नहीं है, उनके हाथ से छूट गई है। और खेलो बारिश में, क्योंकि ये आई एम श्योर बॉल गीली हुई है। जब बॉल बाहर जा रही है या फिर आउटफील्ड में ट्रैवल कर रही है वो गीली होती जा रही है और ये डिफिकल्ट कंडीशंस हैं। और मैं ये नहीं मानता कि ये गेंदबाज को या किसी भी प्लेयर को ये डिफिकल्ट कंडीशंस मिलनी चाहिए। हाँ, मैच अगर हो सके तो आपको मैच खिलाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बारिश में कंटिन्यूअसली मैच खिलाते जाएं, क्योंकि हम यही समझ रहे हैं कि मान लीजिए कोई स्लिप होता है, गिर जाता है, तो क्या आप अंपायर उस पर जिम्मेदारी लेते हैं क्या? आखिरी गेंद फ्री हिट, और फ्री हिट एक फुल टॉस है, लॉफ्ट कर दिया है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। ये आउट तो नहीं हो सकते लेकिन रन जरूर बन सकते हैं। चलिए 140 का लक्ष्य आ गया है भारत को, एक फुल टॉस ऑफ स्टंप के बाहर, और इसी के साथ बैरी मैकार्थी ने 33 गेंदों में अपना अर्धशतक ला दिया है, 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से। और ये एक बेहतरीन फाइट बैक आयरलैंड की तरफ से। 31 पे 5 थे, 59 पर 6, लेकिन आखिरी एक विकेट यानी, और 59 कितने ओवर में थे वो 10.3 ओवर में, यानी आखिरी 57 गेंदों में उन्होंने 80 रन स्कोर किए हैं, एक विकेट खोकर। अब मुझे पता नहीं जसप्रीत बुमराह किसके लिए अपलोड कर रहे हैं, क्या अपने प्लेयर्स के लिए अपलोड कर रहे हैं या फिर आयरलैंड नहीं अपने प्लेयर्स के लिए अपलोड कर रहे हैं। ओके, मुझे एक सेकंड के लगा कि वो शायद बैरी मैकार्थी के लिए अपलोड कर रहे हैं कि उन्होंने 50 रन स्कोर किए, लेकिन अब क्लियर हुआ कि नहीं, वो अपने सारे खिलाड़ियों के लिए अपलोड कर रहे हैं, खास करके अर्शदीप के लिए, क्योंकि उनके लिए बहुत खराब ओवर रहा है ये। 22 रन उस ओवर में आए हैं, 4 ओवर 35 रन और 1 विकेट। और अगर हम कहें
पहले 6 ओवर में आए 30 रन 4 विकेट, अगले 9 ओवर में आए 56 रन 2 विकेट, लेकिन आखिरी 5 ओवर में आए 53 रन और एक ही विकेट उन्होंने खोया और आयरलैंड ने खोया। और ये सारी जो बल्लेबाजी है 2 खिलाड़ियों के कंधे पर चली है। सिर्फ 4 ही खिलाड़ी डबल डिजिट्स में आए, उनमें से एक थे कर्टिस कैफर जिन्होंने शानदार 39 रन बनाए 33 गेंदों में, और उसके बाद बैरी मैकार्थी एक शानदार 51 रन बनाए उन्होंने 33 गेंदों में, और उन दोनों की साझेदारी थी 7वें विकेट के लिए 57 रन, जिनकी वजह से सबसे पहले तो आयरलैंड 140 के इस लक्ष्य को दे पाई भारत के लिए, अन्यथा उनकी जो बैटिंग ऑर्डर थी धराशायी हो गई थी न्यू बॉल के अगेंस्ट। एंडी बैलबर्नी दूसरे गेंद पर ही आउट, पहली गेंद पर चौका, दूसरे गेंद पर बोल्ड, बुमराह 4 रन के निजी स्कोर पर। फिर लॉकन टकर आउट हो गए 0 पर उसी ओवर में बुमराह के गेंदबाजी में। फिर प्रसिद्ध कृष्णा आए, उन्होंने हैरी टेक्टर को आउट किया 9 रन पर। फिर उसके बाद चौथी विकेट गिरी थी पॉल स्टर्लिंग, गुगली को पढ़ नहीं पाए, बोल्ड हुए थे रवि बिश्नोई की गेंद पर 11 रन बनाकर, और फिर जॉर्ज डॉक्टर भी तुरंत ही आउट हो गए उसी ओवर में 1 रन बनाकर, और 31 पर 5 थी आयरलैंड। उसके बाद एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई कर्टिस कैम्फर और मार्क अडेर के बीच, फिर मार्क अडेर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए रवि बिश्नोई के गेंद पर, वो 16 रन बनाकर गए, और अंत में क्रेग यंग आए और सिर्फ 1 रन नाबाद बना। तो उन्होंने थोड़ी बहुत यहाँ पर सहायता जरूर की है स्कोरर्स की, पर अदरवाइज एक अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस। लेकिन आयरलैंड की जो आखिरी 5 ओवर रहे हैं वो आयरलैंड के नाम रहे हैं। प्लीज शौर्या, भारतीय बॉलिंग के बारे में आप जरूर बताइए। जी हाँ, तो शुरुआत में जसप्रीत बुमराह 4 ओवर 24 रन और 2 विकेट, अच्छी कमबैक मैं कहूँगा उनके द्वारा, क्योंकि पहले 2 ओवर अच्छे डालने के बाद 1 ओवर वो थोड़े एक्सपेंसिव रहे, और उसके बाद एक अच्छी लास्ट ओवर उन्होंने डाली। अर्शदीप सिंह 4 ओवर 35 रन और 1 विकेट, उनका लास्ट ओवर बिल्कुल भी उनके हाथ में नहीं था, पर ड्यू टू द मॉइस्चर मैं कहूँगा ये उनका आखिरी ओवर अच्छा नहीं रहा। प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर 32 रन और 2 विकेट, काफी अच्छी शुरुआत, फिर थोड़े एक्सपेंसिव रहे बाद में। रवि बिश्नोई बढ़िया 4 ओवर, काफी बढ़िया स्पेल रहा उनका, 23 रन और 2 विकेट, और एक अच्छा DRS डिसीजन जो उन्होंने लिया उस पे उन्हें 1 विकेट जरूर मिला। शिवम दुबे 1 ओवर 6 रन और कोई विकेट नहीं, और वाशिंगटन सुंदर 3 ओवर और 19 रन उन्होंने, तो काफी इकोनॉमिकल एज अ बॉलर रहे हैं। तो जी हाँ, जो टोटल अभी एक अच्छी पार्टनरशिप मैं कहूँगा और एक अच्छी बैटिंग जो आखिर में बैरी मैकार्थी और कर्टिस कैम्फर ने की है, उसके वजह से, उसके बलबूते पे जो आयरिश टीम पहुंची है वो पहुंची है 139 की तरफ। अभी तो ये देखना पड़ेगा कि इंडिया कैसे इसको रिस्पॉन्ड करती है और क्या इंडिया की स्ट्रैटेजी होगी यहाँ से। तो 140 स्पेशली आपने स्ट्रैटेजी की बात की, तो मैं देखना चाहूंगा कि क्या यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन को एक प्रमोशन मिलता है ज्यादा बैटिंग करने के लिए, क्योंकि ये मैच प्राइमरीली ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन और रिंकू सिंह के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा को तो हमने देख लिया वेस्ट इंडीज में, और जब आपके पास ऐसे टोटल्स आते हैं जो आप कॉन्फिडेंट है आप आराम से जीत जाएंगे, शायद आपको इनको एक बैटिंग प्रमोशन देना चाहिए। लेकिन वो मेरी फिलॉसफी है, मैं भारतीय टीम का कप्तान नहीं हूं, फिलहाल तो मैं अपने घर का भी कप्तान नहीं हूं, लेकिन हम जा रहे हैं एक इनिंग्स ब्रेक में, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे जब दूसरी पारी यहाँ पर शुरू हुई। तब तक के लिए हमारे पॉडकास्ट जो है जरूर सुनिएगा। जुड़ते हैं थोड़ी देर में। You are listening to Flash News, brought to you by Crickong. Ladies and gentlemen, cricket fanatics from all around the world, welcome to another exhilarating edition of Flash News. I'm your host Isha, and get ready to be swept up in a whirlwind of cricket updates that are guaranteed to leave you both informed and exhilarated. So, fasten your seatbelts, because we are about to take you on a riveting journey through the latest cricket stories that are setting the sports world on fire. Get ready to witness the triumphant return of a true pace maestro. Jasprit Bumrah is making his grand entrance back onto the cricket field, and this time, he's stepping in as the captain for India in the upcoming T20I series against Ireland. After an absence of a staggering 326 days, Bumrah is gearing up to make his presence felt once again. But here is the twist, he's not just returning as a player, but as the leader of the pack. Now, the question on everyone's mind is, does this added responsibility add to the pressure for the veteran pacer?
We have got a fascinating perspective from none other than ex-BCCI selector Sabah Karim. He dives deep into the dynamics of Bumrah's newfound captaincy role, shedding light on how this experience might actually help Bumrah elevate his game to new heights. From mastering his skills to fine-tuning his strategies, could this captaincy stint be a blessing in disguise for Bumrah? This is a segment you absolutely don't want to miss. Greetings, cricket aficionados. As the Asia Cup and the Cricket World Cup loom closer on the horizon, the selectors have their work cut out for them. Now the burning question, will KL Rahul and Shreyas Iyer recover in time to make it to the squad? The answer remains tantalizingly uncertain, but fear not, because we have got the ultimate insider's perspective. Enter former India wicketkeeper batter Sabah Karim, who's unraveling the intricate puzzle of player substitutions. He walks us through the various scenarios, unveiling how young talents like Ishan Kishan and Suryakumar Yadav could step up to the plate if the need arises. With a dash of expert analysis, a sprinkle of insightful predictions, and a whole lot of anticipation, this segment is your one-stop shop for all things squad-related. The stage is set for some thrilling twists and turns. Hey there, fellow cricket enthusiasts. The echoes of the Ashes might have quieted down, but the impact of England's audacious baseball strategy is still reverberating. Enter the legendary Aussie skipper Ricky Ponting, who's peeling back the curtain to give us an exclusive look into the psyche of the Australian team as they grappled with England's unique approach. From heart-stopping victories to nail-biting draws, Ponting delves into how the Australian bowling attack was left astounded by the unconventional baseball phenomenon. But don't assume it's all gloom. Ponting serves up an insightful analysis of the 2-2 scoreline that had the cricketing world buzzing. Get ready to relive the Ashes through the eyes of one of the game's greatest. This is a perspective you won't want to miss. Hello, cricket devotees. It's time to tip our hats to a cricketing luminary who's gracefully walked off the international stage. Lahiru Thirimane, the Sri Lankan cricket star, has bid adieu to the world of competitive cricket. The Executive Committee of Sri Lanka Cricket has accepted his resignation, and as we bid farewell, we are also taking a fond look back at Thirimane's remarkable journey. From captivating test battles to electrifying ODIs and thrilling T20Is, Thirimane's contributions have woven themselves into the tapestry of the sport. As we celebrate his accomplishments, we are reminded that cricket is not just a game, it's a legacy that lives on. Brace yourselves for a twist in the tale. Marlon Samuels, the enigmatic former West Indies cricketer, has found himself entangled in a web of controversy. Found guilty of breaching the anti-corruption code set by the Emirates Cricket Board, Samuel's cricketing journey is one of both triumphs and trials. From undisclosed payments to cooperation wars, we are delving into the labyrinth of events that have led to this verdict. But this isn't the first time Samuels has walked the tightrope of controversy. From on-field clashes to social media uproars, his career has been anything but ordinary. Buckle up as we navigate through the highs and lows of Samuel's cricketing saga. Dear cricket fans, are you ready for a behind-the-scenes peek at the magic of stadiums? The iconic M.A. Chidambaram Stadium is gearing up to host the ICC Men's ODI World Cup, and the Tamil Nadu Cricket Association is leaving no stone unturned in this grand preparation. From state-of-the-art LED floodlights casting their glow to rejuvenated stands ready to embrace the cheering crowds, this legendary venue is undergoing a splendid transformation. But that's not all. We're diving deep into the heart of this cricketing cathedral, unveiling the meticulous efforts to create an unforgettable experience for both players and fans alike. Before we wrap up, fantasy team enthusiasts can now revolutionize their gaming experience with our Crickong app. Prepare to unlock the full potential of your team selection as our app provides a wide array of interactive features and expert predictions. Our esteemed analysts offer valuable insights and game-changing analysis, giving you a strategic advantage in the highly anticipated live matches.
We emphasize the significance of considering multiple factors and making informed decisions to optimize your team's performance. Immerse yourself in the thrill of the game with our engaging live commentary and captivating podcast. We highly value your input and encourage you to share your feedback through our interactive chat option. It's time to take your fantasy team selection to new heights and dominate the competition like never before. And there you have it. Another riveting chapter of Flash News concludes. Remember, the cricketing world never sleeps, and neither do we. So, stay engaged, keep those cricketing spirits soaring high, and join us next time for another whirlwind of updates from the ever-evolving universe of cricket. I'm Isha, your cricket confidant, signing off for now. This is Flash News, brought to you by Crickong. The much-anticipated 2023 Asia Cup is gearing up to be a monumental event, marking the 16th edition of this prestigious cricket tournament. Set to unfold in the realm of one-day internationals, a total of 6 teams are poised to vie for supremacy on the field during this edition. Mark your calendars for the cricketing extravaganza, as the Asia Cup is... स्वागत है आपका इस दूसरे पारी में, क्योंकि बहुत ही छोटा ब्रेक था ये। हमें ऐसा लगा कि शायद थोड़ा और बड़ा ब्रेक होगा ये, बट नहीं, हार्डली 6 या 7 मिनट का ही ब्रेक था। और यहाँ पर रन चेस का प्रारंभ आप कर सकते हो, और आप नहीं मतलब आयरलैंड कर सकती है। और यहाँ पर एक लेंथ गेंद, ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल आए हैं रन चेस का प्रारंभ करने के लिए। और माँ कडेर, जिनकी औसत है T20 क्रिकेट में विद द न्यू बॉल यहाँ पर 19.32, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर एक नॉर्मली T20 में हम स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन एवरेज की उतनी बात नहीं करते। बट हाँ, इन भाई साहब की तो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उतनी अच्छी गेंदबाजी वो करते हैं। मार्केडर अप राइट आर्म ओवर द विकेट, यशस्वी जायसवाल को लेंथ गेंद और इसे खेल दिया सीधा बैक बॉलर के ऊपर से। और क्या ये सीमा रेखा के पार जाएगी चौके के लिए? जी नहीं। अच्छी फील्डिंग मिड ऑफ के फील्डर द्वारा, जो मिड ऑन के फील्डर से पहले पहुंच गए गेंद तक, और उस गेंद को पीछे धकेल दिया, 2 रन तक सीमित कर दिया वहां पर यशस्वी जायसवाल को। और इसी के साथ जो है भारत ने अपना खाता खोल दिया। तो 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के यहाँ पर भारत, यशस्वी जायसवाल और यहाँ पर आयरलैंड ने बल्लेबाजी के साथ तो थोड़ी बहुत फाइट जरूर दिखाई टुवर्ड्स द एंड, लेकिन क्या गेंदबाजी के साथ कर सकती है? और इसी बीच बेहतरीन शॉट यशस्वी जायसवाल का, छोटी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, और इसे कट कर दिया है जायसवाल ने पॉइंट के पीछे से 4 रनों के लिए। ये उनकी स्ट्रेंथ है, और वो कवर ड्राइव्स काफी अच्छे मारते हैं, स्क्वायर ड्राइव्स भी अच्छे मारते हैं। और अगर कुछ भी आपने गेंदबाजी में खराबी की, गलती की, तो उस पर पूरी तरह से टूट पड़ते हैं यशस्वी जायसवाल। बैक ऑफ अ लेंथ गेंद थी और ज्यादा रूम नहीं थी, ज्यादा रूम दिया ही नहीं था माँ कडेर ने, लेकिन फिर भी रूम बनाया यशस्वी जायसवाल ने और उसे कट कर दिया बैकवर्ड पॉइंट के भी पीछे से। यानी आप सोच सकते हैं किस तरह से कोन बनाया उन्होंने, और अपने नाम एक चौका कर दिया। 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के भारत। और एक बार शॉर्ट बॉल, और यहाँ पर थोड़ी बहुत चोट लग गई है यशस्वी जायसवाल को, क्योंकि पुल करने का प्रयास कर रहे थे, गेंद थोड़ी ऊपर रही, और पुल करने के प्रयास में गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया और सीधा उनके पेट में जाकर लगी, तो गेंद उन्हें लग गई है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत उन्हें यहाँ पर तकलीफ जरूर हुई है। लेकिन काफी यहाँ पर कह सकते एक युवा खिलाड़ी हैं और गट्सी खिलाड़ी हैं, वो उन्होंने फिजियो को भी नहीं बुलाया, और अब तैयार है वो अगली गेंद का सामना करने के लिए। और यहाँ पर थोड़ी बहुत मुझे आयरलैंड की कप्तानी पर भी एक यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगाना है, कि मानता हूं कि आपके पास इतनी बड़ी टोटल नहीं है, पर फिर भी आप नई गेंद के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, कम से कम एक हाथ स्लिप तो आप रख ही सकते थे, पर यहाँ पर स्लिप ही नहीं रखी है। और ये लीजिए ड्राइव कर दिया है ओवर पिच ऑप्शन के बाहर, और कवर की दिशा में यहाँ पर दूसरा चौका इस रन चेस का। 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के यहाँ पर भारत पहुंच गया है। लक्ष्य है 140, और 140 में से 10 रन
ऑलरेडी पहले ओवर या पहले 5 गेंदों में यहाँ पर निकाल दिए हैं। सारे के सारे रन जो है यशस्वी जायसवाल के बल्ले से ही आए हैं। दूसरे बॉल पे 2 रन, तीसरे बॉल पे चौका, 5वें बॉल पे चौका। इस तरह से 10 रन आए हैं इस पहले ओवर में। और जिस तरह से एक T20 मुझे याद है, शायद चौथा T20 था वो, जहां पर यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ नहीं थे, वहां पर शुभमन गिल थे, जिन्होंने ऑलमोस्ट एक 10 विकेट से जीत हासिल कर दी। एक अच्छी कमबैक मार्क अडेर द्वारा, लेंथ पर डाली गेंद लेग स्टंप के बाहर और उसे बाहर की तरफ एंगल किया। यशस्वी जायसवाल ने उसे डिफेंड करने का प्रयास किया पर चूक गए, जैसे गेंद बाहर की तरफ निकल गई। तो एक अच्छी शुरुआत भारत द्वारा, 10 रन इस पहले ओवर में 140 के लक्ष्य का पीछा करते हुए। Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong app. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickong app. Don't let जॉश लिटिल नए गेंद से गेंदबाजी करेंगे, नए गेंद को शेयर करेंगे मार्क अडेर के साथ। मुझे लगा शायद जो है कर्टिस कैम्फर गेंदबाजी करेंगे नए गेंद के साथ, पर नहीं, यहाँ पर जॉश लिटिल को दिया गया है नई गेंद, क्योंकि जॉश लिटिल गेंद को स्विंग करते हैं। पर अमूमन वो नई गेंद के साथ और डेथ ओवर्स में आके एक अच्छी गेंदबाजी करते हैं और मिडिल ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करते हैं। बट अभी यहाँ पर क्योंकि थोड़ी ओवरकास्ट कंडीशंस है और थैंकफुली यहाँ पर बारिश ज्यादा तेज नहीं हो रही है, यहाँ पर उन्हें गेंदबाजी की है। पहली गेंद एकदम बराबर टप्पे पर जाकर लगी और एक डिफेंड कर दिया वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ने, और वहीं दूसरी गेंद पर एक छोटी गेंद थी, उसे कट कर दिया पॉइंट के पीछे 1 रन के लिए। और जॉश लिटिल क्योंकि इंडियन T20 लीग 2 साल से खेल रहे हैं, तो दोनों भारतीय बल्लेबाज भी उनसे अकस्टम्ड रहेंगे और वो भी भारतीय बल्लेबाजों के सामने थोड़े बहुत यहाँ पर अकस्टम्ड रहेंगे। फिलहाल जहां तक 2023 सीजन का सवाल है, 7 विकेटें ली उन्होंने 8.7 के इकोनॉमी से, लेकिन पिछला वर्ष उनके लिए काफी अच्छा बीता था। डाउन द लेग साइड उसे टक करने का प्रयास, गेंद गई, ओ यहाँ पर रनआउट का मौका है क्या? यहाँ पर रनआउट का मौका होने वाला है जी। यहाँ पर किस्मत दोनों के साथ, ऋतुराज गायकवाड़ और यहाँ पर यशस्वी जायसवाल के साथ भी टोटल कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। यहाँ पर एक विकेट जा सकता था भारत के लिए, लेकिन बच गए दोनों ही खिलाड़ी। पहले तो लेंथ पर थी गेंद, उसे टक कर दिया शॉर्ट फाइन लेग की तरफ और दोनों खिलाड़ी भागने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ वापस आ गए और फिर देखा दोनों ही खिलाड़ी एक ही एंड पर आ गए, नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर। थ्रो आई शॉर्ट फाइन लेग से मिड ऑफ की तरफ, मिड ऑफ के खिलाड़ी ने कवर किया और उन्होंने कीपर की तरफ फेंकी गेंद, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ पहुंच गए और वहां पर इवेंचुअली 1 रन ले लिया। लेग बाय का इशारा पर एक बहुत बड़ा मौका गवाया यहाँ पर आयरलैंड ने। मुस्कुरा तो रहे हैं सब लोग, लेकिन ये भारत की तरफ से भी गलती है और आयरलैंड की तरफ से भी गलती है। सिर्फ गलती आयरलैंड की तरफ से ज्यादा है, भारत की तरफ से गलती यह है कि ऋतुराज गायकवाड़ ने कॉल ही नहीं किया यशस्वी जायसवाल को, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ऋतुराज को देख रहे थे और ऋतुराज ने पहले भागना शुरू किया तो यशस्वी ने भी भागना शुरू किया। फिर उसके बाद ऋतुराज ने अपने मन से ही पीछे यू-टर्न मारा और इस छोर पर आ गए। अब यशस्वी ने तो देखा ही नहीं, वो तो आगे देख के चल रहे थे और वो भी पहुंच गए उस नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जब दोनों वहां पर पहुंच गए, तब वो मिड ऑफ के फील्डर ने यहाँ पर गलती कर दी, थ्रो बहुत ही खराब फेंकी और ऋतुराज गायकवाड़ पहुंच गए, उन्होंने रन बनाया। और यहाँ पर एक कैच की अपील है, एक लेंथ पर टप्पा खाई गेंद और जायसवाल ने उसे खेलने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास करते करते गेंद ने टप्पा खाकर बाहर की तरफ यहाँ पर कोण बना लिया और मुझे ऐसा लगा गेंद ने जो है बाहरी किनारे को मिस कर दिया। लेकिन जॉश लिटिल बहुत ही कॉन्फिडेंट थे और पॉल स्टर्लिंग अपने गेंदबाज के साथ जाते हुए और एक रिव्यू ले लिया यहाँ पर। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद
गेंद ने जो है बल्ले को बीट कर चली गई है, क्योंकि अच्छा खासा डिविएशन दिखा बल्ले पर आने से पहले ही। और जॉस लिटल कह रहे हैं कि उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। मुझे ऐसा लगता है कि बल्ला लेग साइड पर जा चुका था और शायद जो आवाज जॉस लिटल को आई है वो शायद गेंद थाई पैड को लगने से आई है। जी अल्ट्रा चेक कर रहे हैं, बल्ले से तो नहीं है। और जो आवाज जॉस लिटल को आई है वो गेंद ट्राउजर को लगने से आई। तो बेहतरीन अंपायरिंग वहां पर ऑन फील्ड अंपायर द्वारा। और आयरलैंड एक रिव्यू यहां पर खोते हुए 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के यहां पर भारत आराम से ये 11 for 1 या 12 for 1 हो सकता था, पर किस्मत जो है भारत के साथ। और ये होता है कभी कभी, ओवर एक्साइटमेंट में होता है। आयरलैंड को पता था वहां पर एक रनआउट का मौका था और वहां पर शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर ने एक डायरेक्ट हिट का प्रयास किया, जबकि अगर वो थोड़ी देर रुक जाते तो शायद वो स्ट्राइकर्स एंड पे आराम से एक रनआउट कर सकते थे, चाहे वो ऋतुराज गायकवाड़ का हो या फिर यशस्वी जायसवाल का। अगली गेंद आउट स्विंगर काफी बाहर ऑफ स्टंप के, उसे छोड़ दिया यशस्वी जायसवाल ने। 2 ओवर के बाद भारत 13 बिना किसी विकेट के नुकसान के 127 रन की आवश्यकता 108 गेंदों में। Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong app. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an बैरी मैकार्थी अभी तीसरे बॉलर हैं 3 ओवर में जिनका इस्तेमाल हो रहा है। पहला ओवर मार्क अडेर ने डाला था, दूसरा ओवर जॉस लिटल ने डाला था और तीसरा ओवर अब बैरी मैकार्थी डाल रहे हैं। पहली गेंद एक आउट स्विंगर लेंथ पर टप्पा खाई, ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ गई और उसे ऋतुराज गायकवाड़ ने जाने दिया विकेटकीपर के दस्तानों में। 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के भारत। और पिछले ओवर में एक घटना हुई थी जो दुर्घटना में बदल सकती थी। थाई पैड से लगकर गई थी यशस्वी जायसवाल के शॉर्ट फाइन की तरफ और दोनों खिलाड़ी एक ही एंड पर थे, दोनों बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर फिर भी आयरलैंड ने वहां पर एक रनआउट का मौका गवा दिया और एंड में भारत को एक रन भी मिल गया। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ अ लेंथ बाहर की तरफ जाती हुई और उसे गाइड कर दिया डीप थर्ड की तरफ 1 रन के लिए। और बैरी मैकार्थी जिन्होंने बहुत ही अच्छी एक बल्लेबाजी की, और कभी कभी ये माना जाता है कि अगर आपने अच्छी बल्लेबाजी की तो फिर नॉर्मली वो आपके दूसरे यानी आपके गेंदबाजी में भी आपको मदद करता है। तो इसीलिए शायद कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने बैरी मैकार्थी को यहाँ पर गेंदबाजी दी है। कभी कभी मोमेंटम जो है आपके साथ आ जाता है और यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं बैरी मैकार्थी। फिलहाल शुरुआत तो अच्छी की है, 3 गेंदों में 1 ही रन दिया है। ये एक इन स्विंगर रही और नॉर्मली एक आउट स्विंगर, ये जो गेंदबाज है वो नॉर्मली विद द एंगल राइट हैंडर के लिए आउट स्विंगर डालते हैं, यानी गेंद बाहर की तरफ लेके जाते हैं, और लेफ्ट हैंडर के लिए इन स्विंगर यानी गेंद अंदर की तरफ लेके आते हैं। तो ये वाली जायसवाल को उन्होंने अंदर लाई ऑफ स्टंप पर पिच खाकर, और जायसवाल ने एक अच्छी तकनीक का इस्तेमाल और मुजाहरा पेश करते हुए उसे ड्राइव कर दिया मिड ऑन की तरफ। रन लेने का कोई भी मौका नहीं, 14 बिना किसी विकेट के नुकसान के भारत। और एक बार फिर से काफी बहुत ज्यादा ही ओवरकास्ट हो गया है, पर जैसे कि अभी तक चलता आ रहा है, हम उम्मीद करेंगे कि अंपायर्स थोड़ी देर और यहाँ पर इस गेम को कंटिन्यू करें। और यहाँ पर क्योंकि जहां तक रन चेज का सवाल है, अगर 5 ओवर फेंके जाते हैं इस रन चेज में तो ये मैच जो है एक कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा एक T20I में, नहीं तो। और एक बार फिर से वो कहते हैं ना गट्सी क्रिकेटर हैं ये यशस्वी जायसवाल, क्योंकि एक छोटी गेंद थी यहाँ पर बैरी मैकार्थी की जो पिच होकर उछली और यशस्वी जायसवाल ने इसे खेलने का प्रयास किया, लेकिन उनके लेफ्ट ग्लव में जाकर लगी और तुरंत ही उन्होंने ग्लव निकाला और थोड़ी दर्द जरूर हुई, लेकिन उन्होंने तुरंत फिजियो को कहा कि नहीं आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही उसको देख लूंगा। फिर भी फिजियो खड़े हैं वहां पर बाउंड्री लाइन के बाहर कि क्या उन्हें बुलाना चाहिए कि नहीं। अब ऋतुराज गायकवाड़ यशस्वी जायसवाल से बात करते हुए, और ये लीजिए इसे कहते हैं एक टफ नट। वो जो कहते हैं ना कि डोंट शो एनी पेन, उन्हें दर्द तो हो रहा होगा पर वो दिखाना नहीं चाहते आयरलैंड को कि उन्हें दर्द हो रहा है, और फिलहाल बैटिंग पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं। अगली गेंद इस तीसरे ओवर की 5वीं गेंद, फिलहाल इस ओवर में 1 रन आता हुआ, 4 गेंदों में 1 रन।
बैक ऑफ अ लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर, उसे शॉर्ट थर्ड के बाएं तरफ से खेल दिया। बैकवर्ड पॉइंट काफी फाइन है, ऑलमोस्ट थर्ड शॉट, ऑलमोस्ट डीप थर्ड की उधर ही है और वहां पर एक ही रन मिलेगा। तो ये होता है कि आपको ये सब तो लगते रहता है, जब भी आप बल्लेबाज हो तो आपको कहाँ कहाँ नहीं लगता। अगर हम निकोलस पूरन की बात करें, जिन्होंने हाल ही में वेस्ट इंडीज को श्रृंखला जिताई थी भारत के खिलाफ 3-2, तो उन्होंने कहा था कि बिना दर्द सहन किए आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। और जब अगले दिन पे उन्होंने दिखाया कि उनके बदन पर कितने कितने ब्रूजेस लगे थे, तब उनके लिए रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गया। बैक ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ जाती हुई उसे गाइड कर दिया ऋतुराज गायकवाड़ ने डीप पॉइंट की तरफ। 1 रन लिया वहां पर, एक अच्छा ओवर, एक अच्छी शुरुआत बैरी मैकार्थी द्वारा, सिर्फ 3 रन उस ओवर में आते हुए। 3 ओवर के बाद भारत 16 बिना किसी विकेट के नुकसान के 140 के लक्ष्य का पीछा करते हुए। Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong app. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary. बेहतरीन टाइमिंग ऋतुराज गायकवाड़ की, ओवर पिच गेंद, आउट स्विंगर जॉस लिटिल की ऑफ स्टंप के बाहर, और उसे एक घुटने के बल पे ड्राइव कर दिया कवर के दिशा में 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट ऋतुराज गायकवाड़ का, और ये ऋतुराज गायकवाड़ का पहला चौका। पहले ओवर में भारत ने 2 चौके लगाए, दोनों यशस्वी जायसवाल के बल्ले से। उसके बाद अगले 2 ओवर में एक भी चौका नहीं आया, पर अब चौथे ओवर में ये यहाँ पर भारत का तीसरा चौका और पहला ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से। अगली गेंद ओवर द विकेट से अंदर आती हुई गेंद, इस बार लेंथ से पिच से अंदर आती हुई, स्विंग नहीं हुई और गायकवाड़ ने उसे डैप कर दिया कवर की तरफ, टिप एंड रन। और इस बार कम्युनिकेशन काफी अच्छी दोनों बल्लेबाजों के बीच, और रनआउट का कोई मौका नहीं, और 1 रन वहां पर ले लिया। 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के यहाँ पर भारत काफी कंफर्टेबल, कुछ ज्यादा यहाँ पर। हाँ, ये अलग बात है कि पहले ओवर में 10 रन आने के बाद शायद ऐसा लगा हो कि अगले 3 ओवर में और ज्यादा रन आने चाहिए थे, पर वो तो एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण में मतभेद हो सकता है। बैक ऑफ अ लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर, और जायसवाल ने उसे पंच करने का प्रयास किया ऑन दी अप, पर बॉल पिच खाकर बाहर की तरफ, पिच पर टप्पा खाकर बाहर की तरफ गई और जायसवाल को बीट कर गई। तो पिच पर बाउंस है, पिच पर थोड़ी सी मूवमेंट है, और क्योंकि बारिश भी गिर रही है और कंटिन्यूसली गिर रही है, पिच थोड़ी डैम्प और मॉइस्ट भी है, तो उसकी वजह से जो हवा में नमी है, थोड़ी बहुत मॉइस्चर भी पिच में है, जिसकी वजह से भी बॉल को थोड़ी मूवमेंट मिल रही है। 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के भारत। स्वागत है आपका शौर्य। जी हाँ, और यहाँ पे मैं कहूँगा यहाँ पे शुरुआत ही हुई है भारत के लिए इस 140 के टोटल के लिए जो उन्हें चेस करना है। यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ एक अच्छे फॉर्म में और एक अच्छे लय में है, दिखते आ रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले उनका इंडियन T20 लीग काफी, दोनों बल्लेबाजों का काफी बेहतरीन रहा, और उसके बाद यशस्वी जायसवाल की बात की जाए तो काफी बढ़िया उनका जो टूर ऑफ वेस्ट इंडीज था। अगर आप हर सिरे से देखें, अगर आप टेस्ट के सिरे से देखें, अगर आप T20 के सिरे से देखें, तो हर जगह उन्होंने काफी बेहतरीन प्रदर्शन दिया है, और यहाँ पे भी आयरलैंड जैसी कंडीशंस में भी वो एक अच्छा प्रदर्शन देने की जरूर कोशिश करेंगे। एक अच्छी चीज है, एक बड़ा कंपैरिजन मैं कहूँगा यहाँ पे दोनों टीमों का है कि एक टीम जहाँ पे अर्ली ऑन काफी विकेट्स उन्होंने गंवाए, यहाँ पे उनकी शुरुआत का प्लान यही होगा दोनों बल्लेबाजों का, यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ का, कि हम अभी आराम से खेलेंगे, इतने ज्यादा रन बनाने के पीछे नहीं भागेंगे, मैच हमें कोई 10वीं ओवर में खत्म नहीं करना है। जैसे ही कोई लूजनर डिलीवरी थी, जैसे जॉशुआ लिटिल की पहली डिलीवरी थोड़ी लूज रह गई और उसे पनिश जरूर किया यहाँ पे बल्लेबाज ने, और इस बार बेहतर डिलीवरी डाल के ओवर की समाप्ति की। आउटसाइड द ऑफ स्टंप एक शॉर्टर लेंथ डिलीवरी, और ऋतुराज गायकवाड़ ने कह दिया जी नहीं, मैं खेलने की भी कोशिश नहीं करूंगा, मैं बैट भी नहीं डालूंगा, और एक वेल लेफ्ट मैं कहूँगा उनसे ओवर की समाप्ति के लिए। और यही एक अच्छी स्ट्रैटेजी की इस्तेमाल की जा रही है यहाँ पे यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच में, कि दोनों बल्लेबाज
अपने आप को वो टाइम और वो समय दे रहे हैं इस मैं कहूँगा एक ओवरकास्ट कंडीशन भी नहीं, ओवरकास्ट से कुछ ज़्यादा ही है, बारिश अभी भी गिर रही है। ऐसी कंडीशन में वो दोनों बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं, तो वो अपने आप को वो हैप्पैज़र्ड विकेट अपना नहीं खोना चाहते और वो एक मैच्योर्ड इनिंग्स की तरफ लोग रुख ले रहे हैं। और यहाँ पे बैरी मकार्थी आते हुए एक अच्छी बैटिंग उनकी रही है, काफ़ी बढ़िया बैटिंग उनकी रही है आज, और इसे वो ज़रूर अपने रेज्यूमे में ऐड करेंगे। मैं रेज्यूमे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी बैटिंग परफॉर्मेंसेस बस केवल कैमियो की तरह देखी जाती है, और पहली बार ऐसे एक एक्सपीरियंस नॉक खेलते हुए देखे गए हैं यहाँ पे बैरी मकार्थी, और काफ़ी खुश रह गए, या हारे या जीते वो आज का गेम वो काफ़ी खुश रह गए घर जाते हुए। इस बार डाउन द लेग गेंद डाली और यशस्वी जायसवाल बस टिपटो करे और फ्लिक करके एक सिंगल उन्होंने निकाला है। यहाँ पे 23 फॉर नो लॉस है भारत फिलहाल, 140 का टारगेट है और बारिश की बढ़ने की संभावनाएं काफ़ी है। अगर आप मेरे विजुअल्स के बारे में बात करें, जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बूंदे जो है बारिश की वो कैमरा पे भी आई है, और जैसा कार्तिक ने भी काफ़ी बार कहा है, मेरे पार्टनर कार्तिक ने, कि ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं होती। पहले तो फील्डर्स ऑफ इंडिया के लिए नहीं थी और अभी फील्डर्स ऑफ आयरलैंड के लिए भी ये एक अच्छी स्थिति मैं कहूँगा नहीं होगी। हाथ से बॉल काफ़ी ज़्यादा छूटता है, और हमने जैसे अर्शदीप सिंह की आखिरी ओवर देखी कि बॉल उनके हाथ से काफ़ी बार छूट रहा था। और जी हाँ, यहाँ पे ऑडियंस ने अपने अम्ब्रेलास खोल दिए हैं, और यहाँ पे सब रेन कोट्स और विंड शटर्स पहनने की तरकार कर रहे हैं, क्योंकि बारिश काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है। और जैसे हमने कहा है, ये येलो वार्निंग दी गई है आज, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। और मकार्थी अच्छी ओवर जा रही है, उनकी पहली ओवर भी काफ़ी अच्छी थी, केवल 3 रन, और इस ओवर में भी 3 रन। पर जी हाँ, बारिश में ये गेम खिलाना एक रिस्क फैक्टर ज़रूर होगा। और अगर हम डीएल मेथड देखें, क्योंकि अभी दिखाया जा रहा है, कैलकुलेट किया जा रहा है, तो उस पर अभी तो वही हो रहा है कि 23 रन कुछ तो दिखा रहे हैं, पर शायद वो कैलकुलेशन अभी तक पूरी हुई नहीं है। खैर, ये एक अच्छी ओवर की तरफ रुख ले रहा है आयरलैंड की तरफ, क्योंकि रन्स इतने नहीं आ रहे, और शायद जो दोनों बल्लेबाज है वो आराम से खेलना चाहते हैं। पर इस बार काफी बढ़िया शॉट ऋतुराज गायकवाड़ का, एक शॉट डिलीवरी डाली मकार्थी ने और उसे एक काफी बेहतरीन तरीके से पुल कर दिया है ऋतुराज गायकवाड़ ने। और ये शॉट से मुझे रोहित शर्मा की जरूर याद आएगी, क्योंकि वो जो उनका आइकॉनिक पुल शॉट है उसी की तरह मारा उन्होंने और सीधा छक्के की तरफ रुख लिया, ये फाइन लेग की तरफ, और एक बढ़िया शॉट उनकी तरफ से। और बारिश भी बढ़ते हुए, पर इस शॉट की जरूर मैं प्रशंसा करूंगा। और बारिश की अगर वापस बात करने आए, तो अभी अंपायर्स को इस ओवर के बाद एक टॉक करना चाहिए, और उसी दरमियान यहाँ पे मकार्थी और एक बाउंसर डालते हुए, और जैसे हमने कहा है कि ये पिच में काफ़ी ज़्यादा बाउंस है, तो बाउंस काफ़ी ज़्यादा होके एक वाइड 32 फॉर नो लॉस है अभी इंडिया। और दोनों बल्लेबाज जो 1-2 बॉल उनको जिनमें रूम मिल रहा है, जिनमें उन्हें अच्छा शॉट मारने का, प्रदर्शन करने का मौका मिल रहा है, तभी वो रिस्क ले रहे हैं। और मैं रिस्क भी नहीं कहूँगा, वो अपने पोटेंशियल और अपने स्किल्स और एबिलिटीज पे वो शॉट मार रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो स्किल्स ज़रूर है, पर वो रिस्कफुल शॉट्स बिल्कुल नहीं खेल रहे, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ से हमें बस अपना विकेट बचाना है। जैसे ही पावर प्ले की समाप्ति होगी, हम फिर बड़े टोटल की तरफ रुख लेंगे। यहाँ पे हुई है 5वें ओवर की समाप्ति, 33 फॉर नो लॉस है इंडिया टीम की बैटिंग।
Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong app. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition जॉश लिटल यहाँ पे अपनी तीसरी ओवर डालते हुए माफ कीजिएगा, यहाँ पे उनकी पहली गेंद एक वाइड थी और 34 फॉर नो लॉस है इंडिया। और अभी हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे कैसे ये दोनों जो बल्लेबाज है वो मोमेंटम का शिफ्ट करते हैं, क्योंकि यशस्वी जायसवाल और रुद्रराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल ज़्यादातर 14 रन बना चुके, 17 डिलीवरी खेले, तो थोड़ा आराम का मामला तो ज़रूर है अभी तक, तो कि वो इस टोटल को चार्ज नहीं कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, वो इस टोटल को ऑन एग्रेशन नहीं खेल रहे हैं, और वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। पर हमें अभी देखना पड़ेगा आयरलैंड क्या करता है, क्योंकि उन्हें एक रिस्पॉन्स की ज़्यादा ज़रूरत है, और ये एक रिस्पॉन्स के तरफ रुख ले रहा था, क्योंकि जॉशुआ लिटिल उन्होंने डाली एक आउटसाइड द ऑफ स्टंप लेंथ डिलीवरी, और बॉल स्विंग होके थोड़ी स्लोअर डाली, और बॉल स्विंग होके लेग स्टंप की तरफ गई, और अपील की गई है, शायद एलबीडब्ल्यू की अपील की गई है, और शायद एक गेंद लेग स्टंप को छू सकती है या उसके लेग स्टंप को मिस भी कर सकती है, क्योंकि थोड़ा सा बाउंस जरूर था। उसी के साथ जो बल्लेबाज थे वो थोड़े कंफर्टेबल दिख रहे हैं। यशस्वी जायसवाल को डाली है, पर जो कप्तान है पॉल स्टर्लिंग, उन्होंने ले लिया है एक DRS रिव्यू, तो हमें अभी देखना पड़ेगा कि ये क्या होता है। जी हाँ, ये तो शायद डाउन द लेग जा रही है, ये बॉल पिच तो हुई है मिडिल स्टंप पे, पर उसके बाद डाउन द लेग जाते हुए दिखेगी, और सबसे पहले अल्ट्रा एज नहीं, जी हाँ यहाँ पे अल्ट्रा एज नहीं कह दिया है, ये नॉट आउट होगा, क्योंकि बैट और पैड्स के बीच में बॉल लगी, और बैट के एज को लग के पैड को रिकोशे हुआ है ये गेंद, तो ये तो जरूर नॉट आउट होगा। इनसाइड ऑफ द बैट लगा, फिर पैड को गया, तो यहाँ पे तो बॉल ट्रैकर की तरफ जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही अंपायर के लिए ये एक कंफर्टेबल डिसीजन, और आयरलैंड एक रिव्यू मिस करते हुए और एक बार, तो देखना पड़ेगा अभी यहाँ से क्या बदलाव करती है आयरिश बॉलिंग, क्योंकि ये एक बड़ा गेम मैं उनके लिए तो नहीं कहूँगा, पर अभी क्योंकि एक अच्छा रिस्पेक्टेबल टोटल आफ्टर अ बैड सिचुएशन उनकी टीम ने बनाया है, तो यहाँ से वो मोमेंटम जो इंडिया की तरफ जा रहा है उस पे एक ब्रेक डालना पड़ेगा उन्हें। वो ब्रेक एक विकेट के ही थ्रू आने वाला है, चाहे आप जितना भी स्लो खिलवा ले उन्हें, चाहे आप उनसे बाउंड्रीज रुकवा ले, वो इतना फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं टारगेट 140 का है, और जब आपके पास इतने बढ़िया बैटर्स इन दोनों के बाद भी हो, तो आप वो रिस्क टेकिंग शॉट्स 10वीं या 8वीं से 10वीं ओवर में भी खेल सकते हैं। इस बार डाउन दी ग्राउंड आए यशस्वी जायसवाल, और उन्होंने खेल दिया है वो शॉट कवर्स की तरफ, और वो होगा एक चौका, तो एक काफी बढ़िया शॉट यहाँ पे यशस्वी जायसवाल का, और मुझे लग रहा है कि अभी इन दोनों बल्लेबाजों ने श्योर कर दिया है कि हम हर ओवर में एक बाउंड्री तो जरूर लाएंगे, जैसे हमने पहले भी इसके पहली वाली ओवर में देखा था कि रुद्रराज गायकवाड़ ने वो पुल मारा और एक छक्का लिया, तो वो एक ओवर में एक चौका या छक्का ला रहे हैं, और फिर बाकी ओवर सिंगल्स और डबल्स के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पे दोनों बल्लेबाज 18 रन बना चुके हैं,
और वो खुश हो गया। अभी तक की जो पारी उनकी जारी, और क्या बढ़िया शॉट था इसके पहले का। शफल किया पहले, फिर डाउन द ग्राउंड आए और उठा के मार दिया कवर्स की तरफ। तो बेहतरीन यशस्वी जायसवाल ऐसे और शॉटों के लिए जाने जाते हैं। काफी टाइम से उन्हें देखते आ रहे हैं हम एक बढ़िया क्रिकेट खेलते हुए, पहले डोमेस्टिक सर्किट में, फिर इंडियन T20 लीग में और अभी इंटरनेशनली। और इस बार वापस शायद वो जो वेस्ट इंडीज टूर में उनका जो कप्तान रोहित शर्मा के साथ है इंटरैक्शन है, वहां से उन्होंने ये पिक किया, क्योंकि इस बार वापस एक बाउंसर थी और एक बेहतरीन पुल छक्के की तरफ, और इसी छक्के के साथ हुई ओवर की समाप्ति। 45 फॉर नो विकेट्स लॉस्ट है इंडिया, और उन्हें चाहिए 95 रन 84 गेंदों में। Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong app. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickong app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdown. And now it is Craig Young to start his spell, and what a start it has been for him. The first delivery which he bowled was a single, got back Yashasvi Jaiswal on the strike, and then a beautiful bouncer by him, and it was Jaiswal who wanted to mimic what he done earlier on in the over before that, going for that pull shot, going for that sixer. This time he couldn't time it well, and it was Paul Sterling towards the covers region. As the ball edged, it went up, and it was Paul Sterling in the covers region doing no wrong to take that catches the first wicket down for India. They wouldn't be happy. They wouldn't be happy at all. It is Yashasvi Jaiswal who goes back, and I mean to say it will be Yashasvi Jaiswal who wouldn't be happy at all with that dismissal. He was looking in quite a good performance. He was looking in quite a good rhythm, but just one mistake. I think he got confident with that six early on, and he was utilizing, or rather channelizing, that confidence to go for it again. But this time the luck wasn't with him, and I think that the timing wasn't with him as well, and the bowler got the better of him and got his wicket. It is now the new batter coming in, Tilak Verma. 6 matches for him. This is the 6th match for him, as his earlier West Indies series went on quite beautifully. He was the man who was batting very well every game, in and out. Would he continue that form? We'll have to wait and see, as this time it is Young who strikes again, Craig Young, and he gets Tilak Verma, who is in a brilliant form, on a golden duck. The ball was moving outside the leg stump. It was going down the leg stump, and it just swung a bit and swung up. It was an outswinger. Tilak Verma wanted to just flick the ball and got an edge, and that is the wicket of Tilak Verma. And a big wicket for India, as Tilak Verma goes back on a duck, just the ball he played. And now it is Ireland who is striking back, and it is Craig Young who is striking quite so well. Craig Young, who is on a hat-trick right now. Will he able to take a hat-trick and
turn this match and turn this match around? It will be the question, it will be the biggest question that the Irish would be wanting to answer, and the answer which they as a team would be wanting is a hat-trick. But nevertheless, the new batter, who would mostly be Sanju Samson, but we'll have to wait and see if Sanju Samson would arrive or not, as we are just waiting for the telecast to come. And yes, talking about that wicket, what a brilliant ball down the leg it was going. It was a good length delivery, and it just swung enough. I would say it had the enough swing to get the edge. And yes, it is Sanju Samson who has arrived. He has scored quite a lot of experience in T20, in Indian T20 League or in international. And while the hat-trick ball is going to be bowled, the rain is just pouring like it is raining a lot, and it is quite so visible on the camera itself. But the hat-trick ball will be bowled nevertheless, and it is just nudged by Sanju Samson to take a single. And now umpire mostly would be ending the day. No, he is not. It is raining quite a bit. It is raining quite a lot, and the batters are looking at the umpire. The fielders are looking at the umpire. And if we talk about DLS pass score, after 64, India are 3 runs ahead of the par score. So I think now the match would turn into an interesting hit. The umpire isn't stopping the game, nevertheless. The bowler isn't happy. He is just cleaning the ball. He's cleaning the ball and waiting. And now he arrives to bowl his second last delivery of this over. A bouncer, a very good looking bouncer. And it would be just that it. The umpire will have to talk. Will have to talk with the square umpire to make up a decision. As the people, as the covers groundsmen are now catching the covers, as it is pouring quite a lot. It is pouring quite so well, and it is fairly visible on the screen. Yes, and the balls have been given to the umpires now, as they will be calling out the batters and telling the team to go back to the pavilion. Yes, and now that decision has been made. The covers are coming up. The boundaries are getting the boundary ropes are getting off, and the covers coming up now. So it is the rain that has in the end become the spoiled sport for the time, and we hope that we get the match to be completed, as the situation doesn't look quite so well. And if we talk again about the DLS pass score after 6.5 overs, which was for Ireland 45, India are 2 runs ahead of the par score. So that is an important thing to look up to, and it is a rains delay. So we'll hope that the covers are taken off soon, as the covers are putting up. But if we just summarize what has happened till now, it has been a brilliant batting early on, but then a brilliant one good over by Crickong was enough to get 2 wickets, as it was Yashasvi Jaiswal and Tilak Verma who went out on a duck. Yashasvi Jaiswal 24 of 23, and Paul Sterling making no mistake. And then it was Tilak Verma who lost his wicket 2 balls early on. So now we'll have to wait and see what exactly happens, as all the players are going back to the pavilion. But till that time, do turn on, do listen to our podcast, as we will be giving you updates of what exactly happens next. Till that time, please do bear with the rains, as the rains have just come in to become the spoil sports till now. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong app. Our podcast acts as your gateway into the... You are listening to Crickong Podcast.
Hello, Jasprit. How are you? Good, very good. At the end of 2 tests now, how does the body and the mind feel? It's pretty good. It's not too bad. It feels good to be 1-0 ahead as well. It's been an interesting competition, interesting test series. So yeah, looking forward to the next games. Something a tad little emotional, I would think. You lost your father at a very young age. You were 5 years old then. Any early memories of him? Not a lot of memories because I was really young. But yeah, I've got a lot of memories of my mother, working really hard for me and my sister, and a lot of hardships were there when we were growing up. So yeah, all her sacrifices, eventually worked out, and I came into this sport, and I'm reaping the rewards. So you studied in a school where your mom was the headmistress. So how is that dynamic actually? Does it make it hard or? It was not very hard because she was the principal in the pre-primary section and I was obviously in the higher section. But the worst part is that you can't bunk school because I used to go to school with her. If you do anything wrong, all the reports go there. So yeah, that was the negative side to it. But the positive side is that nobody could mess with you and no bullying. So all of these things were on the positive side. Clearly nobody can mess with you. Even the England team are finding it hard to mess with you at this point of time. We'll come to that a little later. But your love for cricket, when did it start? It was always there. Since I was a child, I always wanted to play cricket. When you say child, how old were you? I could be in 5th standard, 6th standard, but my mother is from a service background, so she didn't really understand the sport and she really didn't think that this option is the best option to go forward, and because there's a lot of variables attached to it and a lot of people play cricket, so she was not really sure that you could choose this profession as your career. But I don't know where I got that belief that I could do well in this sport. So she gave me an opportunity that okay, after your 10th standard, we'll give you some time till you finish your graduation. You can try whatever you want to try in cricket, and then if not, probably I was going to go to Canada and settle down there. So, but that didn't work out. And first year into my college, I played in the IPL, 19-year-old, then played everywhere, and then here I am. This action, you'd have to admit, it's very unorthodox. How did that start? At the end of the day, I believe that no action is foolproof, safe, and every fast bowler has some pains here and there. But as a child, when I used to watch cricket, I learned cricket from the television. So I did not get any formal coaching. So I used to copy everybody's action. So I did not have a natural action that this is what came naturally. But later on, I don't know what jumbled up and this is how I ended up with this one. But it didn't give me a lot of pains in my body. And so I thought that, okay, if it's not troubling me, I'll use it to my advantage. And I was lucky that wherever I went, a lot of the coaches didn't really hamper with it and tried to give me the advice that work on your body and everything else would be taken care of. Did something force you to get there? Like, was it a small space, or you looked at something and thought, why don't I start like this? When you first started, how did that come about? So when I started, I used to play a lot of tennis ball cricket, and in India, we play a lot of cricket with the rubber ball. So when I used to play, the boundary was only of this size. So I could only go as far as this. So you couldn't go too far back? No, not too far back, because that was the boundary. Okay. So earlier, I never used to walk so much and, bowl like this, but I used to run all the way through. But later on, I realized I'm wasting too much of energy and the speed is still the same. So nobody told me to do this, but I came up with my own thing that, okay, maybe walk a little and run a little, so maybe preserve energy for the longer spells. And it didn't really trouble me a lot, and it helps me in the longer spells that when you play Ranji Trophy, you obviously bowl a lot of overs. So then later on, I was fresher than the rest of the bowlers. Obviously, I was younger as well, but that helped me. So I thought that, okay, keep it with you and try to take it to international cricket. Now, I want to show you one video of a very, at your under-19 level that you had an action there. Could you talk me through this? In this, the action was different, isn't it? Very different, isn't it? So what do you think is the right coaching ideology when people come up to people with different actions and different batting styles? In this was my first year in under-19 cricket. So as I told you, I learned cricket by watching the television. So this action might be similar to some action that I'd seen on the television and I liked. So I was not trying to change, but I was fascinated by a bowler. I tried to copy him. So that was not the best way to do it. But later on, I did not try to change it again and again, and by being fascinated by any other bowler in the television or watching someone or something that I like. As far as coaching goes, I went to MRF as well. I spoke to Glenn McGrath as well, so he had a discussion with me about tactics and working with Shane Bond in the IPL. I've been lucky in that
everybody that came up to me, they told me that, we're not very sure of changing this action because we are worried that you might lose what you have. For me, I think I try to keep things simple, that if there's some physical difficulty or physical discomfort that I'm facing with my action, and then I'm not able to do what I can and I'm not able to execute what I want to, then I need to change things. But if there's no trouble, I don't look to change a lot of things. So you have to find your own way. You have to figure out your own techniques sometimes, and you have to realize what works for you. Some of the batters don't have the best techniques in the world, but their record speaks for itself. When you're growing up, a lot of people get fascinated towards batting because shots are there. How come you went into a path of fast bowlers where you liked people bowling fast, and who did you enjoy watching? How did that come about? I really don't know the reason, but as a child, batting really never excited me till date as well. Obviously fast bowling gives you that kick, and the fast bowling really gives you that excitement. As a child, I was also only interested in the games where the fast bowlers do well or the bowlers do well, low scoring games. I was not really interested in high scoring games, the batsmen hitting sixes, because somehow, I don't know, it didn't really interest me a lot. Fast bowling creates that excitement, and even when the fast bowlers do well, the whole stadium is cheering and you can feel the buzz. So I think that really appealed to me as a youngster, and I think that is the reason that I went in this direction. So even in domestic cricket, you started with white ball first. Even in international, you started white ball first. And if I'm right, your first big breakthrough did come through John Wright. He spotted you. Can you give us a little bit of a story around what happened then and there? So basically, that was my last year in under-19 cricket. I had played for under-19, under-25s, and I was in the Ranji setup. But I was not picked. I was just selected for the T20 competition, and that was just my second game and playing against Mumbai, Gujarat versus Mumbai. So John Wright had come to watch Akshar because he was signed, and a lot of the players from Mumbai were already there in the Mumbai Indian squad. So I didn't know that I'll get picked. He was there. Everybody came to know that John Wright has come to watch the game. But I was there. I tried to do my thing. I didn't pick up a lot of wickets. I just picked one wicket, but I bowled really well. I didn't give a lot of runs. So he came to watch one more game and he inquired. So PP also was there as our captain. He told me that he was asking. I said he's clearly joking that all of these things don't happen. I thought he was making fun of me because I was a youngster. And after a few days, I get a call from Mumbai Indians that, are you interested? I said, of course I'm interested. This is not even a question that I'm interested. Are you guys interested? So he said, yes, we're going to sign you. And then the contract came in, and then you were also there in that side, and the love story still continues between you and Mumbai Indians. The first time I saw you was, I remember very vividly, we were in Bangalore. That was the first day as a team we had met, so we had to introduce ourselves, stand up and say, hi, I'm Dinesh Karthik, I'm from Tamil Nadu, I'm representing Mumbai Indians, I'm really happy to be here. And that's the first time I heard you speak, when you stood up and said what you had to. A lot of people were very overawed, because you have to understand, in that room there were a few legends, if I may say so. But you were very confident. You came across as somebody very confident. You stood up, you spoke for a few minutes, you were very confident. Is that something that you've always had? I don't know if that was how it was looking, but I was not confident because, as a 19-year-old kid, you come into a room where all your heroes, like if Sachin Tendulkar walks into a room, Ricky Ponting is next, Anil Kumble is next, Mitchell Johnson, Jonty Rhodes, and you were just playing under-19 cricket and now you're here. So it felt a little surreal that, okay, you're here, okay, you try to hold yourself, and I was sitting with Akshar, and not the best, team bonding exercise, because now you have to talk, you have to introduce yourself and the person next to you. So yeah, that was an interesting exercise, but okay, I was able to talk, but I was not really confident, but I was trying to hold my shape and get through with the session and try to interact with them later on. In those initial days, like you said, you've met a few legends. Any interesting conversations that sticks out your mind straight away? I had an interesting partnership with Malinga. He usually doesn't talk a lot, but he came up to me from himself and he said, I saw your bowling in the first game. He was not there back then, but he saw my bowling. He said, I feel you can really do well because you've got a different action. He connected with me, and he came and told me a lot of stories that he was also given just 6 months, that 6 months is the time that his action will last. I got a little more. I got 7 to 8 months. But so I connected with him on that level, and he told me that you've got a lot of things to offer, and since then the partnership has been good. He still talks to me even during that partnership, and during some phases
where I was really eager to play international cricket. I wanted to come up and do well. So he taught me a lot of things that, hard times will come. And before playing international cricket, you have to see everything, because if you don't see hard times and you straight away see hard times in international cricket, then you won't cope up. So all of these things, came up. A lot of the things were there from Sachin sir was there, Ricky Ponting. So all small anecdotes I picked up. Give us a little bit of the love story, how we all met. I know she's a sports anchor. She's, I'm sure she's interviewed you. How did this beautiful relationship start, blossom? Yeah, I'd obviously seen her a lot of times, but we had the same problem with each other, that she thought that I was really arrogant, I thought she was really arrogant, so we never really spoke. But I spoke to her for the first time in 2019 World Cup, and this is how she was here covering the tournament. So I spoke to her, and slowly then we became friends, and we then started talking a lot. And then here we are, and obviously you're aware of a lot of things as well, which we won't bring it over here. You've been part of an interesting conversation as well. So yeah, it's been good, and now we've been married for 5 months. So yeah, very happy. She understands the sport, so she understands cricket as well. She understands what the player goes through. So whenever things don't go well or go well, so we have a lot of interesting conversation, intellectual conversation. So that really helps me. And obviously playing cricket and traveling all the time, you have got your wife with you now, so you have to focus on other things as well, so you can switch off for the game. So yeah, all these factors are really helpful, and I'm very happy that this relationship has developed. So in the 2019 World Cup, we played and we lost in the semis. Are you a kind of person who moves on quickly, or you sit down sometime, take some time? Does it take time to get over these kind of losses? Obviously, you're a part of the squad. You know how the emotion of the squad was, because we were really into the tournament and we were really doing well. So we had high hopes, as any other team would be expecting to win the tournament. But yeah, it was difficult. It took me some time. It took me 3-4 days actually. While you were going back to your home country, I was still thinking about the game. The loss was really hurting, because we thought that we could win the tournament, and we were really going well. The match went to the second day, reserve day. We still thought we could win, and it went really close till MS was there and he got run out. So everybody's emotions were very high, and everybody was really involved. But yeah, this is how the sport works. You learn from it, and whenever it's meant to happen, it will happen, and then you move past it. You're very young, but it's fair to say that you're a leader of the pack. How does that feel for you? What does that mean to you? It feels really good. Nowadays when we get a lot of respect as a fast bowling unit, because we've obviously worked really hard. In 2018, all of these hard works paid a lot of dividends. It started from South Africa. We really wanted to contribute as a fast bowling unit, and we worked really hard. Everybody's gotten fitter as well. So when everybody contributes, it really feels well, and wherever you go, you get a lot of respect, and you're really well spoken of. So it feels really good, and yeah, it's always you can cherish it a lot. The World Test Championship didn't exactly go according to plan for you personally. And now, after 6 weeks, you've played a test match against England. What changed? What were you thinking in those 6 weeks? Because you've turned around brilliantly at that. What did you think? What did a Jasprit Bumrah do during those 6 weeks? Not a lot of technical changes, because I really felt that whenever I bowl or whenever I play, I always analyze my game. I really depend on a realistic evaluation. That I depend on my own evaluation a lot more than any other coach or any other person's evaluation. So I looked at it, and I didn't really find a lot of faults technically, but I thought I was thinking a lot more, and maybe thinking about the end result a lot more. So I was trying to be in the present. I realized that before playing the game, I was trying to put pressure on myself, and thinking about the end results, or maybe wanting to make an impact, or maybe trying to go beyond myself. So I realized that no, this is not going to work a lot, and I'm trying to spend a lot of time and spending a lot of energy thinking about it, and not being in the present, because if I'm not here at that moment, I'm not doing a job for the team, and how can I reach the end result? So if you have to climb a mountain, you have to climb one step at a time. So I realized that, and I give a lot of emphasis on mental preparation, because I feel that as we
we say, it's a mental sport, and 70-80% is a mental sport. So we don't really work on our mind. So I try to focus a lot on my mind. I've included meditation into my game as well. So that helps me to be in the present, not to go beyond myself, not to daydream and look at the end result, or maybe keep a ball in my hand that I've taken 8 wickets, 10 wickets, I'm this and that. Sometimes your mind can really take you further, and you constantly fight with your mind. So I like to win that battle, and I like to be in that, and that was the thing that I was trying to do as well, because I realized that it was a big match and I really wanted to do well. I pushed myself a little too much, so I forgot what I had to do at that moment, and really being in that moment and bowl one ball at a time and being there and try to dismiss the batsman. So I realized that, and I tried to change that. Now we look at a few of the interesting photos. Very interesting, I would say, wow, you must admit that the word selfie was invented in 2013 in the encyclopedia, but you were taking photos much before that, I noticed. You should not go that far below. Where does this vanity come from for Bumrah? Where does this come about? See, not anymore, because now I'm a married man. So this was when I was 19. You can't really take it seriously, because back then all of this was very new, and really sometimes I look at it and I laugh at it. You look at it sometimes? No, but I look at some of my old pictures, and my wife also has seen all of those pictures, and she brings it up and you're saying, what were you trying to do? I said, you don't realize what is it, but it was just for fun, and you were just learning, and sometimes you really thought that this was the cool thing, and this was the thing that if you do and you're cool and you're very, very smart. And I'm learning from my wife, because she's 10 times or maybe 100 times better. So I'm taking some tips, but it's getting better. This is the feedback, at least, that she gives it to me. She feels that you're getting better with that as well. That's good. That's what matters now. Yes. What's your favorite mode of dismissal? Somebody fending a bouncer, or you getting a clean bowl? For me, as a child, the only mode of dismissal I thought existed in cricket was bowling a yorker and getting the batsman bowled. Because in tennis ball cricket, that was the only thing that I used to do. There were no length balls, there were no bouncers, no intimidation. I feel hit the toe or hit the base of the stump. So this is how I learned the yorker, and that's my favorite mode of dismissal as well. Fast bowler and injuries. They're synonymous. You can't get away from it. When you did get that injury in 2014, what changed after that? What did you bring about? So 2014, till then, I had not seen any injury, and I was doing very, very well. So training was not a big part of my life. Proper diet, all of those things were not really a part of my diet, because I was young, didn't need a lot of recovery. I thought that I've got a lot of skill, and that will take me further and take me in my career. But 2014, it was not a cricketing injury. I was warming up with the team playing football, and I twisted my knee, and then I got an ACL reconstruction. It's just like a wake-up call that, okay, suddenly I felt that my career is over. I'd heard that when surgery happens, you're never the same. Actually, you're never the same. You can become better, and I got better. So I used to look at a lot of videos from the cricketers and the other athletes, that if they've recovered, I can recover as well. Since then, I became more serious towards the game. I took training really seriously. Till date, that changed, and I became stronger. I started training well. I started eating well. Started taking care of my body. And injuries, I feel, are a part and parcel. But if I do everything that is there in my control, I try to do whatever I can control and try to prepare in the best I can, and then I can relax. And if you're playing a lot of cricket, then you have to take care of your body, sleep well. If you've ticked all boxes, then if injury happens, you look at it and then you move forward. So as a young bowler or sportsman, you do think it's a lifestyle thing these days? Of course, 100%. We play almost 10 months a year, and if you don't have a proper lifestyle, if you don't sleep well, it's a full your job. It's not a thing that you turn up and you just perform. It's a whole thing, because batsmen can get away a lot of with a lot of things. They have a shoulder pain, they have a knee pain, they have to stand in the slips, just clap, and we have to do the hard job, and we change the game. So I really believe that bowlers take the game forward, and so it's a tough job. If there's some small niggle, you can't play. But I really feel that if you do the tough job and then you make an impact, it's satisfying and it'll be remembered for a long time. You
are belittling batsmen way too much. Look, I am a fan of fast bowling and bowling, so I'll always pick up bowlers and I'll try to highlight them. And so that is how. Is that something that you do consciously? You do feel somewhere that batsmen are probably slightly treated better in our country than bowlers. Is that something that you've thought of? 100%. That is not even up for debate, because I feel that bowlers do the hard job. It's tough, and if we win, they have to play a major role in it. If you have to win titles, obviously batsmen have to play a role. It's not that they don't have a role at all. Thank you. Obviously, everybody has their role, but I am a little biased towards bowlers because I am a bowler as well. And it's a tough job. It takes a lot to be a bowler in all the competitions. Even T20 cricket, the batters, the rules are in your guys' favor, that the boundaries are shorter, the ball doesn't swing now, there's no reverse swing, you've got bigger bats. I don't see any developments coming in the ball to make it swing more or seam more. Keeping all of that aside, if you make an impact, coming against the hardships and coming and making an impact despite all of these things, I feel that that gives you a lot of confidence and a lot of self-belief to do whatever you want to. The 10 ball over to James Anderson that you bowled, you bowled a few bouncers to him. The passage that followed when you all went back to the dressing room, and the next morning, the 4th day morning when you all did come back, it was a completely different test match. What changed? What was the catalyst there? See, basically, I really don't want to go into the details, but when we play the sport, it's never really intentional that we want to really hurt the batsman or trying to aim to hit the batsman. That was our tactic, to get the batsman out and get the lower order out, because when we usually go to Australia or we've gone to South Africa, this is what happens. So that was just the way. But as soon as the game got over and the day got over, we were going back. Some of the words were exchanged and we were really not happy. The exchanges were not really pleasant. I did not hear at that time because I was really tired after a long day, so couldn't really hear what was going on, but all my teammates heard. And then usually I'm a person who doesn't go looking for a fight, or I'll be needed and I get riled up. But when I heard what was said, I really got riled up, and then obviously then I thought, if something has come up, I won't really back down and stay down, because if something comes up, I'll give it 10 times back. So everybody was really charged up and we were really looking for a fight now, that if now something happens, we won't back down and we'll go really hard, but not to lose shape, because we are here to do a job. We don't really want to just talk and don't make an impact. So we were really using that fire to our advantage and then wanted to make a result out of it. That eventually happened, and we were really motivated and determined. Everybody was together. We were really in everybody else's faces, really going hard, and I think that really worked us in our favor. And if at all anything comes up in the future, I think that will obviously be used in the same manner, and that fire will be used in that same direction. Is this the most aggressive that an Indian team that you've been part of has played? Obviously feels like it. Everybody was motivated and determined that we want to really win and make an impact. So obviously that really motivated the whole team. Everybody was fired up, and that really helped in our advantage. I feel that whenever the whole bunch is together and they move towards a single direction and want to do really well, so I think that really helped. So I think everybody's motivated, and that really helped. Last question, and I think nowadays you can't not ask this question. You have a bigger front foot stride than your bowling stride these days. Please tell us a little bit about where does Bumrah, the batsman, how come all of this is suddenly happening? And you can be consistent in bowling, but these days, last 2 matches, you've been consistent with the bat as well. I can't believe I'm saying this to you. Bumrah consistent with the bat. Come on now, give us a little bit. This is what I have a problem with batsmen. That suddenly, when a batsman takes a wicket, we clap, we encourage. But as soon as the bowler does something with the bat, the whole dressing room is laughing. So this is why I have my own technique. We know lower order runs can be crucial, and we are working really hard. Obviously, some of us don't have a lot of ability with the bat, but we have got that fighting spirit, and we want to try to do whatever we can with the limited ability and at least show a fight. And the results are to be shown. I scored a 50, first class 50 in Australia, playing a side game. That was really satisfying. And hitting some sixes with the pull shot was, I really keep that footage and send it to everyone who questions my batting. So that was really, really interesting. But yeah, it really, really helps, and we want to contribute towards the team. And yeah, we're really looking forward to work hard and sometimes contribute a little more as well. On that note, thank you so much, Bumrah. It's an absolute pleasure having you. Good luck. Thank you so much.
podcast. You are listening to Crickong Podcast. There are a lot of things Virat Kohli can't do in India. What would a normal day for Virat Kohli and family be in UK? A normal day, firstly now with our daughter, it's putting her to sleep first thing, then stepping out for, if it's an off day, of course, stepping out for breakfast somewhere, grab a quick coffee in the time that we get, and then come back to the room to be with our daughter again. And then whenever, look, priority is obviously making sure that we stay up to speed with her schedule, and whenever things are done, sorted in the room, then we step out for some time to ourselves, and just taking a stroll down the street is probably the most relaxing thing for the both of us. Just a stroll for Virat Kohli and his wife and daughter Vamika will be one of the best things to happen in their life. Is that fair to say? Absolutely. I mean, such is the reality of our lives back home. Can't complain about anything in life, but we have to adjust and you know, move on with times. How our lives have evolved back home, you know what it's like. Thinking of just going down the street in India is not even a dream for us. It doesn't even arrive in our dreams anymore. So yeah, normalcy for any human being. At the end of the day, we're all human beings who just want some normalcy every now and then and just relax. So do you miss the Virat Kohli that used to go to Chuk Chuk Mein? Of course I do. Of course I do. And those... By the way, that's the local Chinese restaurant, which is a food truck, by the way, which Virat used to go. When Virat was chubby at that stage, is that fair to say? Yes, I was very chubby. Still am very fond of food, but luckily I understood exactly what I need to do to stay at this level till the time I play, and I still miss those days. It's not like those days are out of my memory. I still talk to my friends back home, talk about those days when we used to finish practice and go straight to this mini Chinese food van and just smash whatever we liked without caring about anything in the world. What was a dish that you used to have? I used to obviously eat everything back then. So chicken fried rice was my regular with chili chicken. Szechuan sauce? No, it's chili chicken. No Szechuan sauce, just chicken fried rice and chili chicken. A chubby Virat Kohli to a chiseled Virat Kohli, who is the epitome of what sport is all about today. When did that light bulb moment happen? It happened in 2012. Played the IPL in 2012, and the lead up to that was interesting because I had scored my first Test 100 in Australia in 2012, followed by that game against Sri Lanka in Hobart, where we chased that total down within 40 overs. That came out of nowhere. Honestly, I did not believe that I could do something like that at the international stage. It happened. Gave me so much belief from there, and then Asia Cup came, and I got 183 against Pakistan. On a Sunday, everyone was watching, so things really just turned in about 6 months for me. But I forgot the basics of the game. I started, becoming more desperate, and I thought, went too far ahead of myself. I thought, this IPL, I'm going to dominate everyone. But, the moment IPL started, a few games which didn't go my way, and my mindset completely dropped to the other end. I was eating anything that came in sight. I was finishing, candy packets, 40 pieces a packet. I would finish 3 packets a week. I was eating horribly, sleeping horribly. My habits were all over the place. And I finished IPL. I remember I went home, came out of the shower first day, and I saw myself in the mirror, and I was ashamed. It was literally, I saw myself and I thought I'm looking at another human being, and I told myself, look, if you want to play cricket at the highest level, this is not the way that you can manage. And from next day onwards, I changed everything about my diet, the way I trained, everything, and from then on it was just an obsession. August, September 2014 wasn't your best time in your life. You were struggling in England. That's the best way to put it. Come November, you go to Australia, you smash them, get 400s in 4 test matches. How did the transformation happen? What is the mental shift that happened in 2 months' time when you go from one continent to another? That playing at this level over a long period of time, you tend to go into a space where you become a bit insecure, you become fearful, you want to prove to people how good you are in different conditions. And to be honest, before that Australia tour, I was treating every foreign tour like more like an engineering exam that I have to pass somehow, and I have to show people that I can play at this level. But there I realized that once you're down and out, there was hardly anyone who came to help me. There was hardly anyone who was looking towards me and saying, listen,
let's work together and, you know, try to get your game up to speed. Everyone was just going after me left, right and center. So I was like, am I playing to prove these people wrong? For what? I've got nothing to do with them and they literally have nothing to contribute in my life. So I went back home. I was down for quite a bit. The great thing that happened at that stage was I realized who's with me, who's not. You know, things were filtered to an extent that I just got so relaxed when I went back home. I was like, okay, I've hit rock bottom now. No one believes in me. Everyone thinks I should not be playing Test cricket. So what can I do? I can just work as hard as I can. Went into a bubble. I went to Bombay as well. I called Sachin Tendulkar. I asked for his help. I said, see, I want to get my game right. I want to understand what it's like to score runs at this level. My mindset was simple. I went back home. I told myself, listen, you can't play Test cricket to show people that you can play in England and play in Australia and not get out. And if you don't score, it's no point. You play this game to make your team win. So my mindset was, I'm going to go to Australia. And how am I going to score runs against these guys? I wasn't going out there to survive. And from the time I got back home till the Australia tour, I promise you, I was visualizing every day when I was working out in the gym that I'm hitting Mitchell Johnson, I'm hitting these guys all over the park. And those things came to life eventually because I convinced myself to an extent. When I went there, I was absolutely fearless and things just started flowing. There were two instances in my life that happened with you there. And I realized I'm talking to the greatest cricketer ever. And in my books, one of the greatest sportsmen ever by far that I have met. I think you're the greatest. I don't want to put you on a pedestal, but I want to say this. One, when you were going through what you went through in 2014, I sent you a message saying, don't worry, Virat, a lot of players have gone through. You will get over it. And you sent me, just wait and watch in a couple of months' time. I think, jeez, what a cocky guy. He's struggling. He can't put bat to ball and he's saying, wait in 2 months' time. You go to Australia, you show what it is. It's not like you wanted to show it to me. But, you know, I reached out to you, but the answer I got was, don't worry, just wait and watch. So are you born with this confidence or do you earn this confidence along the journey? That's who I am. To be very honest, that's who I've always been. The background of my journey is not many people know about the background of my journey. I've been speaking to and consulting with the same coach since I was 8 years old, since I stepped foot into my cricket academy, which I learned everything from. My coach Rajkumar Sharma, I still speak to him now, and I was speaking to him a couple of days back. And you know, your perspective in life changes every now and then. As I said, with fame, with money and with success, you know, there are too many people who become close to you, and you know, you tend to sort of forget from the core of your heart who you really are. But this is the guy I've always been. And the beautiful thing about my journey from a young age group has been that I was part of an academy where no one was talking about that academy or that club. So for me, the only way up was if someone's getting 100, I have to get 200. Otherwise, no one's going to notice me. And I had that fire inside me all the time. And that's exactly what I did to come up the ranks. I scored so many runs that people could not ignore me because that was my only driving force. And that actually came from the example that my father set for me. There was a time in my life where there was an opportunity. I was selected for under 14 Delhi team, and then I was dropped at 1 a.m. because of some complications. And you know what happens in state levels. Someone was preferred over me because of some compensations that were done and stuff like that. So the same was offered to my father as well, that if you can, maybe he can get into the team after 2 games. So my father straight away said, I'm not going to pay a single penny to make him play. If he can play on his talent, so be it. If not, it's not meant to be for him. So that stuck with me for life. And I've always relied on myself and what I can do as an individual first. And then I'll take help along the way, and people who have been willing and open to help me and understand who I really am have been the ones that have been closest to me. So this natural, when my back is against the wall, there's only one way for me, and that's forward. And I will do everything in my power to fight my way up again. This is an emotional question. I know your dad meant a lot to you. I know he passed away in 2006. But the next day after that happened, you went to a domestic cricket match and played. What would make a Virat Kohli do that? What was he thinking? I honestly, I was blank that morning, and I called my coach, and he was obviously quite understanding of the situation. He asked me, what do you want to do? And instinctively my answer was, I want to go and play. For me, leaving a cricket game in the middle of me batting overnight was just not an option at all. If I hadn't started the game, that's different. But for me to leave a cricket game in the middle of it was something that I could not even imagine. So leaving my team like that, I felt like it was not fair to the game that I love so much. And you know, that's literally my life and soul. My father would have wanted me to do the same. So it was just a no-brainer for me. And I told my family. My family was a bit surprised that I wanted to go and play. And I just went into a zen mode, and
I just went out there and things just started flowing again, as I said. And these are the times that make you realize that this is exactly what you're meant to do, and everything that happens in your life from here on are going to be this through this source called cricket. So the whole journey, the kind of matches that have happened, the kind of knocks that have happened, the kind of moments that have happened, that people have looked and said, wow, I want to do the same. It's literally me making an impact on other people through this game. So that's when I realized this is my journey, and I need to do things in a very organic, in a very, very pure way. Because when you watch it on TV, you can tell the difference between someone trying to fake it or someone playing with heart, and you obviously want to repeat the same. I saw that in my heroes. So I thought, look, this is exactly what I need to do in life. There was not even a moment of doubt. You take the Under-19 World Cup and then you're jumping and there's aggression. You take 2021 World Test Championship, there's a wicket, probably the 8th wicket, which is innocuous, but you still have the same aggression. That feistiness is what is there on the ground. But off the field, you're a very different person. But do you think this feistiness brings out the best in you every time you step on the field for India and for your franchisees? Well, for me, a game of cricket is about making your team win. I can very well enjoy the process of batting in nets. I can very well smile and have fun and fun and games. But when you mean business, you mean business. In life, I don't have to compete with anyone. I'm not in a space in everyday life where I have to be feisty or aggressive. But for me, one thing was always very clear. When I step onto the field, I'm going to give 120% every game that I play. And one thing for a fact that no one can count that against me. Till the time I play this game, I am going to play this way, and this is who I am. And if my mindset in the field is simple, I will not stand around wanting people to do something that I'm not able to do first. For me, every ball is an event. I'll throw myself around every ball of the whole test match. Whether it's the 90th over of the 5th day, I'll still throw myself around, because for me, every moment is an opportunity to make your team win. And that is exactly why you step onto the field. You have to make that time count. Our careers are so short anyway, even if you play for 20 years. After that, you can't play the game. So when you are on the field, you absolutely make most of it. And I let things flow. I don't necessarily look to put any restrictions or tabs or filters on me, because I feel like I have to be myself. I have to be my organic self. If you don't like it, that's fine. That's for you to judge or you to decide. But is that going to make me change myself? Not at all. So my second greatest moment with you was, I was with you in we played together in RCB. So and we were just chatting, and we had an England tour coming forward. And I remember I was just chatting to you about a game, and I'm like, "What are you doing, Virat?" And he said, "No, I'm just visualizing me playing at Lords, and I've already scored 100." And I'm thinking, absolutely mad guy. What is he talking about? So 2 months later, what is this process of visualization that you speak about, and how important has it been in your journey so far? Massive. For me, as I said before that Australia tour, as I pointed out, honestly, I mean, if you had told me, anyone who would have known what I'm doing in those sessions leading up to the Australia tour, where I was visualizing taking on probably the most dangerous bowler in the world at the moment, Mitchell Johnson, and someone would have told me, you're a fool, that you're literally going in there and wanting to get under his skin or taking him on straight away. But for me, there always have been two options for me. Either it's fight or flight, and I've never taken flight. I've never taken flight. For me, that's just not because look, I can take flight if I can't sleep peacefully at night. For me, it's not worth it. I might as well take the fight. If I fail, I know that I took the right option, and that gives me peace. For me, when I leave the field, as I just said, I need to be able to know that I've given everything I had, and I sleep like a baby. There is nothing else that can distract me then, because in my potential as a human being, God has blessed me with a healthy mind, healthy body, an opportunity which everyone wants. So I have to be honest to that. I have to live up to that. So for me, these things are just a process, just a part of the process, which is you keep moving forward. You keep taking the positive option. Whether you get success or not, that's irrelevant, but never take a backward step. 2014, you play against England, not a great series. Are you one of those guys like, how dare you get me out? Because the next times you've seen England, you've been the highest run scorer in India, you were the highest run scorer again when you played England. So is it a question of, you can't do this to me, I'm the best going around. Every time I see you, I'm going to knock you down. Is that a kind of attitude that you possess, or it's just a process and it just happened? Look, when I step onto the field, I have to believe that I'm the best.
because my mindset, as I said, was very clear from the first time I started playing this game. I'm not going to allow anyone to think that I'm just a pushover on the field. It's not to disrespect anyone, but it's belief in my own abilities. That fine, you have the ball in hand, but if you get it wrong, you know you're getting hit for runs. And I'm going to stand here all day. If you get me out and you bowl a great spell, hats off to you. But the next time I'm going to be here again. So make sure that you bring your A game. And that's the mindset that I try and get into invariably. Because look, at this level, people are going to eat you up. If you show them any vulnerability or fears, they're going to eat you up. So for me, I just have to be as fearless as I can. And even if I get out, I want to get out on my terms. If I get out in confusion, it bothers me a lot because I just don't like the feeling of not knowing what's going on. I might as well make a silly mistake and know this is what I need to correct. Everything else is fine. So I don't go, as I said, I don't go out there anymore to prove anyone wrong. But I put myself in a position where I want to do special things. I want us to win special series. I know you're a big fan of Ronaldo. What do you like about him? The thing I admire about him is that he's probably had people, I won't say disliking him, but disregarding a lot of what he's done over the years, and just his mental strength to just keep going, just being the best in the world. I agree Messi probably has more natural ability, but for this guy to do what he's done day in, day out, and to keep that kind of discipline, to stay at the top of his game for 15 years, it's, for me, that is the epitome of professionalism and discipline and what mindset can do to an individual. Every time he plays, people know that something special could happen, and that's what I admire about him. You're a very rooted guy, you're a family guy. And I remember the first time you met Anushka, I remember this very well. You said, the prettiest girl I've ever seen in my life. How has that been? How has that journey been? The time that you were together and then post-marriage, how has that journey been? Well, it's... I always tell Anushka that, and I've said this many a times. If I hadn't met her, I don't know where I would be in life. I was such a reactive kind of an individual that I just didn't know structure in life, what structure means, you know. Ever since I met her, I knew from the time I met her that... Were you shy at the start to even talk to her? Not really. I mean, I was like how I joke around with everyone. I started joking around with her, and luckily she had the same background as me. Like, did she think, what a nasty guy, he's just coming first day on the set? She found it funny because she said, for the first time I saw someone around me joking about the things that I've experienced as a child. So that really, you know, connected at the right level. And I always tell everyone this, that she's made me realize, as I said, where I am and what impact I can have through what I do. So she's actually elevated me, I don't know how many levels as a person, and that has eventually, you know, filtered through in cricket as well. So I couldn't be more grateful and lucky to have a life partner like her. So is it fair to say that you were like a rough diamond, she's polished you into a nice shining one? Absolutely. She's absolutely my better half. I saw this interview where you said that, you know, when you were young, you used to squeeze the toothpaste all the way to the end. Today you have such nasty habits. I know things like OCD issues, like keeping everything in a bag, in a box. You come to your room, your shoes are in one direction, your bat is in a certain place. Where did this come about, the cleanliness? Did cricket teach you this discipline, or this discipline made you a better cricketer? I wouldn't say I was the most disciplined before, but then again, from the time that shift started happening, eventually what it told me was, you as cricketers, you go away from practice, you spend a lot of time in your room, in your own surroundings. So the surroundings have to make you feel relaxed and calm as well. Somehow I don't like things, you know, just thrown around, and I like to keep things in place, in order. Similarly with my kit bag, with my stuff in the dressing room as well. I just can't see my stuff being thrown around. I like a bit of structure there because it makes me feel aligned, it makes me feel relaxed, calm, that, you know, again, that's part of my process as a human being. Am I being respectful to my surroundings as well? Am I doing what I'm supposed to do, or am I treating the dressing room like a garbage bin that I can throw everything around? No, that for me is unacceptable. I draw my own boundaries, and I make sure that within that I keep everything clean and nice. You have a social media following on one certain platform, about 140 million, which is 2.5 times the population of UK. So that's a lot of people who admire you, who follow you, who love you. I know to a certain extent what you think about the social media, but what would your advice be to the young boy and girl
how do they deal with social media? The only way to deal with social media is, I can relate that example to that 2014 tour and what happened after. It does not matter at all what people have to say about stuff that you post, stuff that you do online. At the end of the day, you have to stay true to why you did what you did. Does that make you feel happy? Is that happening with pure involvement? Is that coming from an organic source? As long as that's the answer, you don't need to worry about what 5 people have to say about you in the comment section. Because I know for a fact people do get affected by this. People take it very, very seriously. And for me, that's just noise. At the end of the day, those are letters typed by someone in a comment section. Why should it bother anyone? Why give that much importance to a person you have no idea who that person is? Stay true to who you are. As an individual, realize your own potential and what you can do with your life. Utilize social media for the right reasons. Don't let it control you. Have control over it to an extent where you know exactly what you need to do with it. And me and Anushka both follow the same thing. She says the same thing. Don't let social media control you. You be in control of how much you want to look at it, what you want to do with it. If you've posted stuff, you don't need to bother about whether 1,000 people abuse you online, whatever they have to say about you. That's just noise for me. And that's always been the case for me as an individual. I've been booed by 40, 50,000 people regularly when I enter the stadium. If I start focusing on those 50,000, I can't play a ball. For me, that's an opportunity. That's an opportunity for me to say, okay, fine, things are stacked up against me. Let me test myself how good I am. So I think the same thing can be applied in that regard as well. One of the things that I have noticed, you reach out to the young boys. And I know, when in your younger days, you had your fair share of parties, you had your fun. But today, you're a very family-oriented guy who's definitely not fascinated by either parties or drinking so much. So, and I know you reach out to these young boys who come. Sometimes you get carried away a little bit with the adulation. Why would you do that? If you told me I had to walk away from this game tomorrow, I can walk away without any regrets. Because everything that I've done since I entered the Indian cricket team has always been for the team. Has always been from the point of view, how can I improve this environment that I'm a part of? The reason why I reach out to these guys is because I don't want them to waste probably months and years of my life that I wasted as a youngster, still trying to figure things out. When I found out the formula for success and what it means to compete at this level, I want these guys to pick it up early so that the transition with Indian cricket can be very smooth. It should not take youngsters 2 and 3 years after the seniors are gone to build the team again. So I want them up to speed immediately when we are, almost about to step out and Indian cricket stays on top. So my mindset has always been, how can I get these guys match ready? How can I get these guys into a space where it doesn't matter whether the guy bowling or running into bowl has got 130, 140 test matches and you've got 4. If you have more belief in yourself than him on the day, you can outplay him. So that's what I've tried to inculcate in their minds. That don't let these norms of playing 30, 40 games and gaining experience fool you. Because even after 80, 90 tests, if you're not in a good frame of mind, experience counts for nothing. You're still going to nick the first ball into slips. So this is a game that has to be played in the moment and you have to play one day at a time. And as long as you're fulfilling your potential on that day, that's all that matters. So that's exactly why I go into that space and I talk to them about the things that I did wrong when I came in. Don't play for, proving people wrong. Don't play for stuff that does not matter, which is England tour, tick mark, Australia tour, tick mark. It doesn't matter at the end of the day. Were you in the right head? Did you? हेलो हेलो हेलो, क्या आप हैं वहां पर अभी भी? क्या आप अभी भी मौजूद हैं? थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड पेशेंटली. And if you are listening to the interview of Jasprit Bumrah, if you're listening to the interview of Virat Kohli, well, we are sorry to interrupt in between, but a sad news from a cricketing point of view, but a very good news from an Indian point of view has come our way is that the match has been called off with the rain not relenting at all. The umpires have had a word with both captains and neither captain had any issue in agreeing to stop play because India were already ahead on the DLS and now playing in this weather would have meant that injuring oneself, and Ireland certainly would not want that because they have got some cricket to play in the coming summer and of course even the Indians too have plenty of cricket coming to play. So unfortunately that's it from this particular T20I. Just to give you a quick summary of what happened in this particular match.
India winning the toss. The big talk was about Jasprit Bumrah making his comeback, and he did make his comeback. First of all, with the toss, winning the toss, calling tails, getting the tails correctly, and choosing to bowl under overcast and rainy conditions. And he took just 2 balls to make an impact. The very second ball, he dislodged the bails of Andy Balbirnie, and then 3 balls later, he got Lachlan Tucker caught behind. We are talking about Jasprit Bumrah, who has come back to international cricket in style. 4 overs, 2 for 24. His bowling spell, and also coupled with the bowling spells of Prasidh Krishna, 4 overs, 2 for 32. Ravi Bishnoi, 4 overs, 2 for 23, helped restrict Ireland to 139 for 7. Having said that, India would be slightly disappointed with the way the second half of their first innings went by, because Ireland were 31 for 5 and then 59 for 6, and from there they were allowed, let's see, okay, will not be that harsh. We'll say that Ireland battled hard and reached a competitive 139 for 7 in their allotted 20 overs. Most of those runs coming from the bat of Barry McCarthy, who made a 51 not out unbeaten 33, and Curtis Camphor, who faced the same number of balls, that's 33, but scored 39. And in reply, well, India started off very cautiously. They didn't go hammer and tongs, but just when they were about to start accelerating, they lost both Yashasvi Jaiswal and Tilak Verma. In a way, well, one believes that India were kind of lucky, because had they not done that acceleration, had Yashasvi Jaiswal not hit that 6, India would have been on the losing side by DLS methods, and it is that close. But let's be honest, DLS is not the real way to decide which way this game would have gone. Yashasvi Jaiswal was dismissed for 24. Tilak Verma was dismissed first ball, and both the wickets falling to Craig Young, who bowled just 5 balls and picked up 2 wickets. And there was nothing much to talk about the Indian innings. A couple of breezy drives from Ruturaj Gaikwad, 19 from 16 not out. Yashasvi Jaiswal, I believe, can tone down a little bit, because he is playing more of a flashy left-hand batter who's just looking to score 4s and 6s, which I believe is not quite his game. He's an all-round cricketer, and he can actually score much more if he just calms down his temper a little bit. This is Karthik and Shaurya welcoming you to a small post-match analysis of a match which was not actually a match that happened, and in a way we thank Mother Nature that they allowed the right team to win, because chasing 140, a team is 47 for 2. You definitely put that chasing side in front to win the match if the match had gone the entire span of 20 overs. So it would have been heavily unfair on India if they had been 43 for 2 and ended up losing by 2 runs just because they were 3 shy. Yeah, and that case would have been really unfair. And I guess that was the reason why the umpires waited for the over to end, and that was the reason why I believe that India just inched over through the DLS method to get this victory. Because if that wouldn't have been there, in the end, as you rightfully said, that this method is not the right reflection of how the game goes and how the match could have turned out to be. But nevertheless, the match has been in the favor of India, and I also believe quite fairly, as 47 for 2 was a great score. And yes, those 2 odd sixes by Ruturaj Gaikwad then came to the strike Yashasvi Jaiswal, and he also went for that pull shot. Both very good pull shots by the batters, which helped, I feel, which just plummeted the Indian team to get those runs and get the match to themselves. And I would say it was the bowlers' show in the starting, and a valiant performance by these 2 batters, especially Curtis Camphor and Barry McCarthy. A brilliant show by these 2 guys. You happy with the way the bowlers had the outing for India, or could you believe that it could have been better? Maybe 139 for 7 could have been 90 or 100 for 8 or 9, or do you just want to say give credit where it's due to Ireland? It started when we saw the innings build up, when the situation was at 59 for 6. The match was looking that it would be stopped. These wickets would fall down before the triple digit mark comes on the scoreboard. But then the way after that, the way Curtis Camphor just started the show, he was waiting quite so fairly,
and that was the point where he was respecting the good deliveries of the Indian bowlers, and then some frustration did turn up on the bowlers to get this partnership, which was at around 33, 34, when they were at around 88, I believe, that the first big shots by Curtis Camphor started, and then it was no stopping them. And at that point, I would say it more than the bowlers not doing a brilliant job. I would give credit to the batters, as I would say the one over of Arshdeep Singh, which mostly affected by the rain, which gave a lot of runs. 22 runs. And that was the 20th over. 28 over, the last over. And before that, that one over of Bumrah, I think the 18th over, which went for 18 runs. Exactly. So these 2 overs kept aside, the bowlers did a very brilliant job rather. And it was I feel the resilience of these 2 batters who firstly calmly played those 11th to 16th over and then went all guns blazing. So I think it was more credits to them to get to this 139 runs. Well, fair enough. Where we are saying that, and that's how sports should be. Give credit where it's due. India bowled really well, and let's touch any kind of wood that's out there, because every Indian fan would be touching the wood anytime the name Bumrah comes up. That he doesn't look like he has come back from an injury. He's looking that fresh. He's enjoying his game. Haven't seen him under pressure, but again, not the toughest of opponents to face up with. He got helpful conditions as well, but that does not mean that he would not have bowled well if the conditions were not helpful. Slightly worried for Arshdeep Singh, because it's been now becoming a pattern. He is starting to leak runs. It's not from now, it's right from the West Indies series, and even in the Indian T20 League. So in the Indian T20 League, I remember he had cleaned up Suryakumar Yadav in one of the games when Mumbai played Punjab, but after that his bowling started to wane a little bit. Is he tired? Because he's now frequently representing India in limited over formats. Maybe he's tired, maybe he needs a break. I'm not sure. And maybe India might just consider giving him, because there is Avesh Khan as well. Avesh Khan is there in the squad too. Today 11 people played, but there are 4 people who did not play, and one of them is Avesh Khan. Maybe they might want to try him and give Arshdeep Singh a bit of a mental break. Not necessarily say that he is dropped, but just a mental break. That was my only concern. Ravi Bishnoi did his reputation no harm. In fact, the way he played with the Irish batters was brilliant. His take of that review against Mark Adair was brilliant, where he told his keeper and the skipper that I know this is out, just take the review. So that confidence was exhilarating. Other than that, to look into anything else, I think would be unfair by us, because can't just say Tilak Verma was a hit in the West Indies and a flop in Ireland. No, there was barely any time to witness anything about Jaiswal, Gaikwad and Tilak Verma. So I confess I am a bit surprised. I might have rather seen Ruturaj Gaikwad and Sanju Samson open up in the series, because we have seen enough of Yashasvi Jaiswal to understand that he is going to be with the Indian team for quite a long time now, at least a decade. And might be across all formats of the game. But Sanju Samson may not be a part of India's T20 World Cup squad come 2024. And maybe this is his last chance to show something to the selectors. And sadly for him, there was nothing in this match. Well, Rinku Singh will get more opportunities, definitely, in the remaining series. And also in the series after the World Cup, I'm pretty much sure he is going to be around the Indian think tank. What are your views? I mean, would you have preferred a little bit of change in the batting lineup, or do you think that, okay, we go with a settled opening pair and settled combination so that no one is confused? I mean, I agree to you a lot that Sanju Samson should have opened, but at the same time, I think with the Indian dugout, they must have gotten out with the plan that yes, the rains look really terrible, and we should go with the plan that the openers open and we get some good DLS runs and we get a good start. So if it rains, we get the match in our pocket. So that must have been the I think the idea behind Yashasvi and Ruturaj Gaikwad opening. Yes, Sanju Samson can open as well, but I think they went with the safer option, I believe. Well, okay, fair enough. I don't think that's any crime, because you still have 2 more T20Is to go, and we are not sure
And since we are talking about the future, I think these guys would get a lot of chances in the future as well. My only concern was with Sanju Samson, and maybe his chances in the West Indies, he himself spoiled it by not getting a pocket full of runs. Well, unfortunately, there is nothing much to talk about in this particular review because hardly anything happened. We have plenty of words to say for as far as India's bowling is concerned, India's bowling attitude is concerned. There might be one camp which might think that from 59 for 6, India should have dismissed their opponents all out. But as Shaurya mentioned, and even I agree to that let's give credit where it's due. Just because India did not pick up 10 wickets does not mean that India did not bowl well. India bowled well, but let's also accept that Ireland played really good cricket, especially that 18th over which we're talking about, which went for 18 runs. That 6 of Bumrah over long on. I don't think that's an easy shot to play. But, Craig Young, beg your pardon, Mark Adair, Barry McCarthy and Curtis Camphor. Barry McCarthy just stole our hearts. 51 from 33, 4 fours and 4 sixes, and he really peppered that long on and mid-wicket boundary. So, we might say that eventually India have got the better of Ireland, and don't look at the run margin. The 2 runs does not make much of a difference. It does not give the proper reading. India were always well ahead of Ireland at this thing. So from Ireland's point of view, at any stage rather, from Ireland's point of view, what I would like to see as a normal cricket fan is a little bit of more purpose with the bat. They were looking too indecisive. Probably they were thinking, when is the rain break going to come? It is raining. When are the umpires going to take us back into the dugout or into the dressing room? Is this match going to have a start and stop? Because apart from that one delivery by Jasprit Bumrah to Andy Balbirnie, India bowled well, but I don't think any of the wickets, okay, fine, even Paul Sterling for that matter, any of the wickets I don't think had the batter's name on the dismissal, which means that either the batter threw his wicket away or was kind of playing in two minds. Should I play defensively or should I play attackingly? Till Curtis Camphor and Barry McCarthy came to the crease. So clearly, Curtis Camphor, Mark Adair and Barry McCarthy applied themselves, whereas the top 4 did not apply themselves at all, and that's a problem which Ireland need to fix. India can excuse this particular innings because there wasn't much to look into it. But come the second T20I, that's on 20th August, that's Sunday, which will be played in Dublin. Well, we certainly hope that it's a better game of cricket to watch for. And interestingly, will India make any changes for that match? Because their batters were certainly not tested out here. There wasn't much game played. Their bowlers have got game time. But would Bumrah and Prasidh Krishna sit out? No, I don't think so. Definitely not. But they should bowl one more. And maybe Arshdeep Singh might just sit out for Avesh Khan. That's what I feel. Just for the fact of giving them a rest in this particular series. In terms of the squad changes that I see, I mean, I'll get Shaurya's opinion also on this. In terms of, the options are Jitesh Sharma in batting, which I don't think would be used. In the all-rounders, India have Shahbaz Ahmed. Again, there hasn't been many opportunity given to Washington Sundar or Shivan Dubey, so I don't see Shahbaz Ahmed coming in. But in the bowling department, there is Avesh Khan and there is Mukesh Kumar. Mukesh Kumar got his chances in the West Indies, so Avesh Khan might just get a chance in the second T20I. You feel India would make any changes for the second T20I? I totally agree with you. Arshdeep Singh has been playing since a long time. Since Indian T20 League, he has been consistently showing up in the international encounters, and I think mental fatigue can be hitting him. It's physically, he does not look that he has some niggle or anything like that, but mental fatigue is a thing, and if he himself doesn't insist for a break, there is a high possibility that with this performance, the chances which he might get further on, when after the World Cup we have more T20s coming in, he might miss on that as well. So also, if he is considered for the ODI World Cup, and if he kind of loses it in a crucial match, then it could have a bad impact on the team. Yes, it could have been a very bad impact on the team. And as a lot of players who are going to the World Cup, they are given timely rests. And Arshdeep Singh is looking like a player who has a prospect to play a lot of games, to be in the team and to be a crucial part of that bowling squad. So
he needs to be given some rest by the selectors. And Avesh Khan is a bowler who has shown time and again that he has the capabilities of bowling quite so well, and this is a chance for him to show up his skills, his abilities, and how well he can do for India as he would. I mean, he should be given a chance, and as we move on to the next match, it would be great that he would get a chance, and he would be bowling with the likes of Jasprit Bumrah as a captain. So it would be a great learning experience rather for him. Right, and as far as Ireland are concerned, I don't think they'll make any change because, first of all, this match is not a complete one at all. And they need some matches under their belt as well. And just one batting failure doesn't mean that you don't have batters at all. So the batters will get another opportunity come Sunday, where we hope that the forecast is much, much better. It was a sad day, Friday, 18th of August, because whatever matches we were seeing, except the ECS, everything had rain. For example, the Maharaja Trophy in Bengaluru had rain. The Andhra Premier League in Andhra Pradesh, Hyderabad had rain. Then the US T20 was the best of the lot. When the toss happened, there was no rain, and after that there was no game. That's how it is due to the rain. And the first two matches were just abandoned due to rain in the USA T10, and then the India-Ireland match where we were expecting the worst. We thought the match would never happen at all, but thankfully we got some match. Even though not a complete match, where we got some kind of an entertainment. Hope that you also got some kind of an entertainment. And well, we leave you with a wet update from Dublin that the match has been called off due to rain, and India win a rain hit encounter by 2 runs via the DLS method. But that does not mean that the match was a close one. It's just that the rain came at the right time for India, where they managed to just edge ahead of the DLS par score. Come Sunday, the 20th of August, we hope that we'll have a more competitive game where India definitely play their natural game, play well, but Ireland also give them some fight and give the onlookers or the listeners a run for their give their money's worth. On that note, this is Karthik and Shaurya signing off. Wish you a very good night and a very upcoming weekend, a very happy weekend, and hope to see you come Saturday for all the different matches that Crickong does podcast for. Until then, you can keep listening to our podcast and other stuff that we keep putting on the app, and you can also give us your feedback on our chat section. Good night and goodbye. Bye-bye. Thank you for tuning in. This is your commentary team signing off. Catch you next time with more exciting live match.